A very good and warm morning to all of you. I, Professor Vivek Joshi from Computer Science and Engineering Department, RNGPIT, heartily welcome all the students in this 3 days online bootcamp. I hope आप सभी की एग्ज़ाम 12th का साइंस की एग्ज़ाम अच्छी रही होगी और समर का जो ये टाइम है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए RNG पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने समर बूट कैंप का आयोजन किया हुआ है और इस बूट कैंप के इनॉग्रेशन फंक्शन में आज हमारे साथ चीफ गेस्ट प्रेजेंट है डॉक्टर लतेश बी चौधरी सर. So Dr. Latesh B. Chaudhary, I heartily welcome you for this inauguration session of 3 days online summer bootcamp. Dr. L. B. Chaudhary is the principal of RNG Patel Institute of Technology since inception. Sir has completed his PhD from SVNIT, Surat. Sir is a director of Science and Engineering Technological Upliftment Foundation, Surat, which is under the development of heavy industry of Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India, New Delhi. Sir is also a Vice Chairman of Quality Circle Forum of India, Surat Subchapter. Sir is a Chairman of Board of Study of Gujarat Technological University for Bachelor of Vocational Courses, degree as well as diploma for syllabus formation and upgradation. Sir is also the Board of Study member of Degree Engineering and Master of Engineering courses of Chemical Engineering and Chemical Technological branches for syllabus and formation as well as upgradation under Gujarat Technological University. Sir act as a member of Doctoral Research Committee of Chemical Engineering, Gujarat Technological University. Sir is also act as a coordinator of Nodal Institute in the field of chemical and petrochemical sector under the stewardship of Anchor Institute, Faculty of Technology, DDU, Nadiyar. Sir is a chief coordinator of GPCB approved Schedule 1 Environment Auditor and NABL accredited Environmental Audit and Consultancy Laboratory of RNG Patel Institute of Technology. Sir is a co-chairman of Academic and Library Committee, the Southern Gujarat Chamber of Commerce Industry, SGCCI, Surat. Sir is also a managing committee member of Institute of Engineers South Gujarat Local Chapter as well as steering committee member of Anchor Institute, Faculty of Technology, DTU, Nadiyar. Sir is a treasurer of GAM's Chambers Commerce of Association, GCCA, Surat. Sir has received several awards during his academic as well as academic career. Sir has received National Award of Dr. A.V. Ramarao Foundation's Best PhD Thesis and Research Award in Chemical Engineering during year 2013. Sir has secured gold medal for first position in MTech at SVNIT Surat. Sir has secured first prize in research paper presentation in National Congress Environmental Research, BITS Pinani, Surat. Sir got success to receive amples of grant nearly 30 crores from government of Gujarat as well as government of India. So I am proud to welcome such an eminent personality with us, Dr. Latesh B. Chaudhary, sir. Once again, I heartily welcome you, sir, for this inauguration session of 3 days boot camp. Along with Dr. Latesh B. Chaudhary, we have with us Dr. K. B. Rathod, Head of Mechanical Engineering Department, Dr. Madhvi B. Desai, Head of Computer Science and Engineering Department, and Dr. Kamal Singh Padiyar from Head of Civil Engineering Department. So I heartily welcome K.B. Rathod sir, Madhvi ma'am, and Kamal sir for this inauguration. Now I request Dr. Latesh B. Chaudhary sir to say a few motivational words to the students and give some glimpse about our today's event. Please, sir, over to you. Yeah. Thank you, Professor Vivek Joshi. Good morning, all. On behalf of RNG Patel Institute of Technology, I warmly welcome you all in Summer Bootcamp 2022, organized by RNG Patel Institute of Technology in association with Student Startup Innovation Policy Cell, Government of Gujarat. I also welcome our head of the departments, Dr. K.B. Rathod, head of Mechanical Department, Dr. Madhvi Ben Desai,
Head of Computer Science and Engineering Department, Dr. Kamal C. Padiyar, Head of Civil Engineering Department, in this inaugural ceremony of the RNGPIT. So friends, during this online bootcamp, we will invite various domain experts from the various IT sectors and from the software industries for sharing the knowledge with you on the different aspects on emerging technology. Today you will learn about the future trends and technologies, which will be covered by our Professor Vivek Joshi. He is Assistant Professor in Computer Science Department of our institute. So as we know that artificial intelligence and other emerging technology is the future trends and technology. So after this session, you will get the exposure of the different technologies used in day-to-day life. And based on that, you can understand what is the future trends and how can you decide your career in this emerging technology. So today you will also learn about the basics of the web designing, which will conduct by our senior alumni member and also a senior web developer of Escrow Infotech Limited Surat by Mr. Manthan Patel. And in the last session, the session will be on the fundamentals and applications of Internet of Things, that is IoT and robotics. So which is very, very interesting for the students, as we know that the smart home concept of smart office, smart city, so that is all because of IoT. And we also know about the different applications of the robotics in the different domain. So you will get the knowledge about this technology in the last session, and that will be covered by one of the senior fellow of the software industry based on Surat. So this is the summer boot camp that cover various emerging technology with various experts. So you will get the good exposure in the emerging technology, right? So during this boot camp, we will also focus on artificial intelligence and machine learning, basics of drone making, application of cloud computing, fundamentals of cybersecurity, 3D printing technology, and the fundamentals of UI and UX design. So we also invite our students and the alumni for sharing their feedback regarding the future trends based on their industrial experiences. सो मैं जानता हूं तब तक सभी 12th के स्टूडेंट्स अभी जिसने एग्जाम दी है ऑलरेडी गुजकेट का एग्जाम भी कवर हो गया है नाउ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग जेई एग्जामिनेशन सो between this we have organized this summer boot camp to provide the knowledge regarding this various technology which is essential for each and every students of the 12th science pass out. So our institute RNGPIT is offering basically 5 UG programs, that is chemical engineering with a specialization in industrial process safety and the waste treatment technology. Second program, that is mechanical engineering with a specialization in 3D printing. Third program, that is computer science and engineering with a specialization in artificial intelligence and machine learning. Fourth program, that is electrical engineering, and fifth program, that is civil engineering. So in this institute, you will get the exposure of the major degree program as well as minor degree in the same tenure of the 4 years. मीन्स कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन ले रहा है और अगर वो स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में करना चाहता है, सो द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग also do the specialization in AI/ML or industrial process safety in this institute with the same tenure of 4 years. ये GTU जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है इज द सेंट्रल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी of the Gujarat state. So our institute will provide the opportunity for the specialization with the minor program. And of course, this degree will be awarded by Gujarat Technological University, which is a central university and first rank university of the entire Gujarat state. So recently, GTU stood the 5th position in entire country.
So in our Gujarat state, all government degree engineering colleges are also affiliated with the GTU, and all these UG programs are also approved by All India Council for Technical Education, that is AICT New Delhi. तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये कंसर्न करना है कि इंस्टीट्यूट एआईसीटी अप्रूव्ड है और किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. So recently, SAFE India has approved our institute as a center of excellence for the emerging technology in association with the L&T and Amul Dairy. So through this center of excellence, our students will also get the technical training support free of cost from the SAFE India in the area of artificial intelligence, cloud computing, block technology, machine learning, etc. And not only that, they will also provide the support of placement of the trained students in the various multinational companies and software domain companies. So we have also applied for the Amazon Web Academy, and that will be also helpful for the placement of the students. So friends, in today's scenario, the placement of students is mainly depend upon the individual skill and practical knowledge in your domain area. So this year, our institute has placed 100% students for the internship training in various industries, including ISRO, L&T, and various multinational companies during their final semester. And I'm proud to say that among total final year students, till date, we have placed 115 students from the final year of computer science and engineering, mechanical engineering, electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, and BWOC software development department in various industries like TCS, L&T Defense, Raison Green Energies Private Limited, Colors Advanced Technology, and various multinational companies and software industries of the South Gujarat region. So this is not possible without the skill development program, and for that we have established specialized 14 skill development laboratories in our institute. We have established Hansaben B. Punawala Vocational Training Center and Research Center at our institute. So we have non-destructing testing laboratory, that is called NDT laboratory. We also offer level 2 certification program in non-destructive testing laboratory. So because of that, most of companies like L&T and other fabrication industry will provide the placement of our students. We also have civil material testing laboratory, that is NABL accredited as per the ISO 17025 standard. We also have EnviroChem audit laboratory, that is also NABL accredited as per the ISO 17025 standard. We also have solar energy research laboratory with 90 kilowatt solar power plant. We also have tinkering laboratory, E-Yantra laboratory in association with the IIT Mumbai, and industrial automation laboratory, dehydration technician laboratory, and solid works design software laboratory in association with Dassault System France. We also provide international certification course on the SolidWorks basic design software for the mechanical engineering students. So the main objective and the main aim of this laboratory is to help the technocrats and the future entrepreneurs to build up the prototypes of their ideas. And for that, we have also developed the tinkering laboratory in association with SSIP Cell, Government of Gujarat. So this tinkering laboratory is designed to cater the project focused on electronics, 3D printing, instrumentation, automation, optics, robotics, IoT, and different type of sensors and the related prototype and design. We also provide financial support to the students up to 2 lakhs for their development of POC. Last year, through this environmental audit and consultancy laboratory, we have carried out environment audit and consultancy work of more than 26 industries in the field of chemical, agrochemical, thermal power station,
common effluent treatment plants, total solid disposal facilities, and etc. for doing environmental audit and consultancy work. I am proud to say that our first batch of pass out students of the BWOC Software Development Department, Mr. Shreyas Naria, has started his own company named as Vision 11 Gaming Private Limited Surat. In very short time span, this company is having 3.5 million users with incredible turnover. He has also collaborated international cricket and kabaddi players as a brand ambassador of his company. So our institute RNGPIT is established in the year 2010, and during the span of 12 years, the institute has been putting endless efforts to impart the quality education for the overall development of the students. I am proud to happy to share that our mechanical engineering department and chemical engineering department are accredited by National Board of Accreditation, New Delhi. आप सभी को मैं अवगत करवाता हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो एनबीए का मूल्यांकन करती है, जो डिपार्टमेंट में फैकल्टी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, डिपार्टमेंट जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का जिस तरह से कंपनी में प्लेसमेंट होता है, उसके बेस पर ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन द्वारा एनबीए का एक्रेडिटेशन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल प्रोग्राम को दिया जाता है. So our mechanical and chemical department are accredited by the National Board of Accreditation, New Delhi. We have also established this student startup and innovation policy of the government of Gujarat to create an integrated statewide university-based innovation ecosystem to support the innovation. So I hope you will get the enough knowledge on various future trends technologies through this summer boot camp. I also congratulate all participants and appreciate the efforts of organizing committee members. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Latesh B. Chaudhary, sir, to motivate us, and provide the glimpse and information about today's uh, 3 days boot camp. So just hold on. So it's a proud moment to hear that two departments, namely BE Mechanical Engineering and BE Chemical Engineering of RNGPIT, is now accredited by National Board of Accreditation. And on this occasion, I wish to welcome Dr. Sohail Sheikh, Head of Electrical Engineering Department. Welcome all the guest of honors. Student, during this boot camp, our all head of department and domain expert and principal sir will remain with us. So try to get maximum benefits from these domain experts. अगर आपके ड्यूरिंग सेशन अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, एनी टाइम यू कैन राइट अस इन चैट बॉक्स. Once again, I heartily welcome Dr. Latesh B. Chaudhary and head of all department. So let's start with our boot camp. So our first session will be on the future trends and technology. So the main agenda of bootcamp is to aware about all the latest technologies. Dear students, अभी आपने 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी हुई है. 2022 में आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और 2026-27 में आप पास आउट होंगे. हमें पता है कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है. एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू एंड न्यू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज इन दिस वर्ल्ड, राइट. सो 4 साल 5 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में होगी, वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रिपेयर करना ही ये बूट कैंप का मेजर एम है, राइट. सो बाय कंसिडरिंग दिस कंटेक्स्ट, I, with permission of Dr. Latesh B. Chaudhary sir, I wish to start our today's first session. Okay, proceed. So, okay, thank you, sir. Thank you. So, just give me a moment, sir.
Once again, good morning and welcome all my dear students. So, as I just stated, that technology is rapidly changing. और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कोविड ने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे दिया है बिकॉज आफ्टर कोविड नाउ टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली गोइंग विद द स्पीड ऑफ 2x मीन्स जो पहले जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आता था उससे कई ज़्यादा स्पीड में टेक्निकल अपग्रेडेशन अभी मार्केट में शुरू हो गया है. सो बिफोर मूविंग टू माई सेशन आई विश टू show video. That video state and that video will provide you glimpse of what will be our world during 2030. 10 साल के बाद हमारा वर्ल्ड टिपिकली इंडिया कहाँ पे होगा उसके रिलेटेड एक वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. The world is advancing at unprecedented rates, and by 2050, we can expect to see life on Earth change drastically. If this is true, then what can we expect from the future? Before we start, make sure to give this video a thumbs up if you enjoy it, subscribe to Tech Division, and hit the bell icon for notifications. Now, let's get into it. Nanotechnology. Scientists have already made great leaps in the world of nanotechnology, and they remain unrelenting in making more of such progress. Nanotechnology has the potential to change everything, from the way we behave to how we interact with each other. Many people in the industry firmly believe that there'll come a time when nanobots will be fitted in our brains, allowing us to live within a larger, more connected virtual reality within our nervous system. This sounds far-fetched, but many people believe it will be a reality sooner or later. Transportation. By 2050, transportation would have changed immensely. We're already seeing self-driving cars in their early phases of trial and error, so in 3 decades it's safe to say we should have the technology for true self-driving vehicles. According to a Stanford University report, self-driving cars would not only reduce traffic-related deaths and injuries, but also bring about a change in lifestyle. When people don't have to drive anymore, they will have more free time for themselves and may choose to live in different places as a result. Companies like Tesla are already working to put out cars with such capabilities, and it won't be too long till we see them in full action. Another interesting technology that could change the way we travel is the Hyperloop 1. The train has the potential to revolutionize transportation forever. According to co-founder Shervin Pashiva, we've reached historic speeds of 310 kilometers an hour, and we're excited to finally show the world the XP1 going into the Hyperloop 1 tube. When you hear the sound of the Hyperloop 1, you hear the sounds of the future. Yes. The Hyperloop could be one of the most revolutionary modes of mass transportation in well over 100 years, and with the help of electromagnetic levitation, the Hyperloop will give people access to a faster, safer and cheaper source of transportation. For many scientists and world leaders, a major issue that clouds the world today is global warming. If people have any chance of attaining a greener and cleaner future, we need to switch practices by favoring more sustainable sources of energy. If we can manage to do that, we can expect to see a large difference in the future of our planet. Energy. The ocean could provide us with a solution when it comes to renewable energy. The thermal energy hidden away in the ocean is immense and largely untapped at this point. Blue Rise is a company that is working on creating an energy breakthrough, one of the likes that haven't been seen before. If their project pulls through, it will be able to outcompete fossil fuel-based sources of energy. Blue Rise is just one of the many ambitious companies trying to break out of the traditional means of energy production and can hopefully provide us with new solutions for the environmental problems that plague the world today. Space exploration.
One promise that many people are still waiting on is one of space exploration. Companies like SpaceX and Blue Origin are making strides towards their respective goals of spatial exploration and colonization out of this world. We're not sure which goal will come to fruition first, but we can expect to have the capabilities to make space tourism a reality by 2050. People who can afford it will be able to spend up to a week in orbit. But be wary. According to many experts, spending a week in orbit won't come cheap, and it'll likely stay that way for a long time. Artificial intelligence. AI is already much more advanced than it was 10 years ago, and it will only continue to witness rapid and exponential developments. Experts like John Maeda believe that AI will have surpassed the processing power of all living brains on Earth in the near future. To properly function in that kind of society, it will be necessary to work together with these new systems to make sure that the preservation of important human values is carried forward. The rise of AI and change in culture will make technology an integral part of the workforce in the coming years. Everything will be connected and driven by data. Researchers also believe that the landscape of many industries, as well as the job market, will radically change as a consequence. If we are to go by the current trajectory of things, almost half of the world's current jobs won't even exist in 2050. Many of the physical labor jobs will be given out to the machines and robots, opening up new and safer job opportunities for the people. We can also expect to see people moving away from the traditional work systems, wanting more time to themselves, thus moving comfortably from the 9-to-5 lifestyle. Education. Education is another industry that will see a drastic change in the next 30 years. According to experts, at least 90% of the student population will be pursuing online degrees by 2050. Unless the world devolves into an apocalypse, education will continue to be more globalized, and more solutions will come that allow more people to receive good education efficiently. The world has recently witnessed a huge move to online education, and it seems like more educational institutions have seen some of its benefits. Online education will likely continue to be the way of the future and will help people learn from any corner of the world. According to an article from Commercial Micro Manufacturing, robots will most likely take over many of the tasks you would expect your regular educators to handle. These robots will be capable of preparing courses, giving lectures, answering questions, setting and marking assignments, and providing feedback on time. And because robots don't require payment and can work tirelessly around the clock, they will serve as cost-effective solutions for educational institutions. There's no doubt that the world will be quite different by 2050. We will see our existing systems and structures improve drastically, which will in turn change the way people function all around the world. The advancement of both AI and space travel will most likely be huge factors that help spark the radical change in the coming years. We can only hope that when that happens, we don't find ourselves in an apocalyptic nightmare instead. What kind of changes do you expect to come by 2050? Let us know in the comments below, and make sure to like this video if you enjoyed, and subscribe to the Tech Division for more videos. सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने वीडियो में जो भी टेक्नोलॉजी देखी, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट मोड पे है, और विद इन द स्पान ऑफ 3 to 5 years ऑल दिस टेक्नोलॉजीज विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो कुछ 2-3 टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हाइपरलूप, द साउंड ऑफ फ्यूचर, जो आपने वीडियो में एक्सपीरियंस किया, right? So that hyperloop technology is currently implemented between Mumbai to Pune, or जो it is already in testing phase. So sooner this technology will be available to all of us. Electric car और इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट. अब आप सभी के शहर में आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, और उसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत धीरे धीरे इंक्रीजिंग मैनर में बढ़ रही है. ऑटोमेटेड कार, एक वीडियो के अंदर एक टेक्नोलॉजी दिखाई गई है कि ड्राइवर सो रहा है और कार अपने आप चालू मतलब चल रही है. फॉरेन में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और टेस्ला, you might be aware, it is the major the
technological aspect which will help us to bring autonomous car in our India. और टेस्ला ने ऑलरेडी अपनी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर कर दी है, so sooner you will have lot of opportunities. IoT, robotics, drone technology, right, all these are future technology as well as artificial intelligence and machine learning. So during this bootcamp हम इस सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. so यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ हर एक टेक्नोलॉजी का, और अपकमिंग सेशंस के अंदर हम इस सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. हर एक सेशन आपको फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए, आपके करियर सिलेक्शन के लिए यूज़ होने वाला है. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू grasp as much as possible. So now I'm just starting my presentation. So for that I'm just sharing my screen. Just give me a moment. So my today's major agenda is to give you the scope of all future trends and technologies, and based on that you can take decision about your future growth and future development. Right? So typically, what is engineering? Right. So application of math and science to create something of value from our natural resources. So ultimately, our as an engineer, our role will be to provide something new to contribute for the betterment of society. And mathematics and science is the important aspect, and that is the reason that only division A student who has studied maths during 11 and 12 is permitted to take admission in engineering. Nowadays there are a lot of disruptions are going in the technology. So what are these disruptions? So here I just tried to compare two typical aspects. So something which was the scenario before 4 5 years, right? So left side पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो पिक्चर मुंबई का है. So before 3 4 years we used to travel through the cars, right? And right hand side पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो है उबर एंड ओला. राइट, हर एक स्टूडेंट उबर और ओला के से वाकिफ है. सो this is the online services. Now you can book taxi from Uber and Ola. Taxi will come to your home. Previously you used to reach to the taxi stand and you used to hire a taxi, right? So scenario is completely changed. So here technology plays a very important role. Another disruption you can see here, left hand side you it's Grover, right? So why I have considered the Grover, because Grover is one of your Indian uh, Indian startup. That's why I have considered this a Grover, right? And another technological platforms are also available. Flipkart is there, Amazon is there. Now Reliance Jio has their own platform. So technologically now all these daily requirement will be delivered to your home. You need not require to go to the shopping complex. This is all just because of the technological upgradation and technological improvement. Again कोविड पैंडेमिक इज़ द बेस्ट एग्जांपल, राइट. कोविड पैंडेमिक के दौरान आपकी स्कूल और कॉलेजेस बंद थी, लेकिन घर पे बैठ के आपकी पढ़ाई चालू थी. ऑनलाइन आप कोचिंग ले रहे थे और ई बुक्स और पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आप स्टडी कर रहे थे, राइट. सो दिस इज अगेन द अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. This is a very important aspect. OYO rooms, as well as we do have Make My Trip and Go IBO. पहले अगर आपको कहीं पे भी होटल बुक करनी होती थी तो आपको होटल में जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके रूम देखना पड़ता था और फिर आप वहाँ पे रूम बुक कर सकते थे. लेकिन nowadays what happens is you can see all the rooms through online portal, online mode. You can book room from your home. You can directly reach to hotel and you can enjoy your stay, right? Even train booking, railway booking, means bus booking, flight booking, everything is possible with the finger, with the finger of tap, right? That is nothing but using your mobile devices. This is nothing but technological upgradation. So here again I tried to show some more example. Flipkart is there, Snapdeal is there, and Myntra is there.
Major another aspect is Zomato, Swiggy and Food Panda, right? So पहले अभी का अगर करंट सिनेरियो की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो एनालिसिस और स्टेटिस्टिक्स रिलीज हुए हैं उसके हिसाब से आउट ऑफ 100% 60% फूड रेस्टोरेंट से घर पे डिलीवर होता है, और ओनली 35% पीपल प्रीफर टू टेक अ लंच और डिनर इन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट. सो आप घर बैठ के फूड ऑर्डर कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. फ्यूल कंजम्पशन और टाइम सेविंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल aspect. So these are the again disruption media. So you are aware all these platform, and these all are nothing but the technological aspect. You all are using this social media tools and social media aspect. So the major concern is nowadays we feel like mobile device, your WhatsApp, your Facebook, your website, all these are technologies. This is the major concern, right? So according to us, all these are not technologies. All these are nothing but the fundamental aspects of technologies. इट इज़ नॉट लाइक अभी जहाँ पे भी मतलब हम जब स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि वी वांट टू गो, वी वांट टू टेक एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, आईटी ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच. गुड. Right now we do have some scope in IT industries, but industry 5.0, industry 4.0 plays a major role. Nowadays IT technologies is adopted by every industry, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे फिर वो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हो, सिविल इंडस्ट्रीज हो या केमिकल इंडस्ट्रीज हो. आप कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग कंसेप्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको ड्रोन रिलेटेड कंसेप्ट मिलेंगे, वहाँ पे आपको रोबोट्स मिलेंगे, राइट? एंड ऑल दीज things, if we club together, we can say it is the concept of industry 5.0. We are revolutionizing our industries. We are technically making our industries strengthen using the concept of artificial intelligence, IoT, drone technology, robotics, etc. 3D printing is one of the legendary aspects. So I wish to take you to the journey of industry 5.0. You can see in this video this one robo hand, right? So that robo hand is trying to work with the concept. So during 90s we used to have industry 1.0. So एक छोटे छोटे मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते थे. उसके बाद इंडस्ट्री 2.0 मार्केट में आया, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का इवेल्युएशन हुआ. आफ्टर इंडस्ट्री 2.0 वी यूज टू हैव इंडस्ट्री 3.0. वहाँ पे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ. उसके बाद इंडस्ट्री 4.0 जहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जहाँ पे machine used to work with internets, machine used to work with automated technology. Now we are in the era of industry 5.0. You can see एक बंदा है जो अपने हाथ से पूरे मशीन को कंट्रोल कर रहा है. You can control every aspect through your mobile device, through your finger, right? So this is industry 5.0, right? So every industry used to work in the same scenario. This is the another example. You can see this is regarding how IoT is evolving in this era. How IoT, how other industries, mechanical industries, chemical industries, civil industries are using IoT for smoothing out their work, right? So you just have a look on that video. So you can see that every car is connected with each other through this internet of things, राइट. हर एक कार अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से अगर ट्रैफिक जाम होता है तो वो आपको एडवांस में पता चल जाता है. इवन यू कैन आस्क योर मोबाइल टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट. इवन यू कैन आस्क योर मोबाइल डिवाइसेस टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर यू. आपका जो स्मार्ट वॉच है वो आपकी हेल्थ मॉनिटर करता है, राइट. और through mobile device you can operate each and every aspect of your daily routine as well as your daily activities. So this is nothing but industry 5.0. Before moving to this slide, right, I wish to give one example. What is industry 5.0? Right? So let's take an example of manufacturing plant of automated car or electric car manufacturing.
राइट. सो अलग अलग जितनी भी ब्रांचेज है, इंजीनियरिंग ब्रांचेज, वो सब कैसे एक दूसरे के साथ क्लब होती है. राइट. सो एवरी ब्रांचेज आर को रिलेटेड विथ ईच अदर. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ योर कार. सो यू कैन सी दिस इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ योर कार. यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे. राइट. सो यू कैन सी robots are actually manufacturing car. Even you can't see any human present over here. राइट. सो ये एग्जाम्पल के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बिल्डिंग्स है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सेटअप है, वो बनाने का काम जो करता है उसको हम सिविल इंजीनियर्स बोलते हैं. राइट. मैन्युफैक्चरिंग का बिल्डिंग बन जाने के बाद उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मशीनरीज है, उसको इंस्टॉल करने के का जो काम होता है, वो जो करता है वो काम टिपिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स का है. राइट. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो कार प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, उसको भी हैंडल करने का काम जो होता है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का होता है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस कार. ऑटोनोमस कार मीन्स सेल्फ ड्राइविंग कार, वो अपने आप चलती है. राइट. सो सेल्फ ड्राइविंग कार के अपने आप चलाने के लिए उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करना होता है, उसके अंदर जो अल्गोरिदम बिल्ड करना होता है, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कंसेप्ट का इंटीग्रेशन करना होता है, वो जो काम होता है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो करते हैं. उसके ये जो कार होती है उसके अंदर बैटरी, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो उसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करने के काम, या फिर उसको उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसको पावर सप्लाई रिलेटेड काम, उसका चार्जिंग स्टेशन का काम, ये सब काम करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रहती है. और द कूलिंग सिस्टम जो कार के अंदर रहती है, कूलिंग सिस्टम, स्मॉल बैटरीज विथ लॉन्ग लाइफ कैपेबिलिटी का जो भी R&D काम होता है, वो सब काम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है केमिकल इंजीनियर्स की. सो हर एक ब्रांच एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है यहाँ पे. मीन्स अगर मैकेनिकल का बंदा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट लर्न कर लेता है तो उसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बंदे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि क्योंकि उसने दो टेक्नोलॉजी लर्न किया हुआ रहेगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी लर्न किया हुआ रहेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लर्न किया हुआ रहेगा. मीन्स दो तरह के काम वो अकेला बंदा कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका रेपो और रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट ने माइनर कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो जैसे डॉक्टर लतेश बी चौधरी सर ने अपने स्पीच के अंदर अनाउंस किया कि माइनर कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू डील विथ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज द रीज़न एंड दिस इज द नीड ऑफ माइनर कोर्सेज. राइट. One more technology I wish to show. This is the 3D printing. You know that baby Groot, right? So see how these 3D printers will be helpful to develop any such component requirement, right? So right now we are building this 3D model, and along with this 3D model, you can see that this model is currently developed by your 3D printer devices, right? And we will have session on 3D printer during third day of this bootcamp. We will try to learn about all these aspects. Another technology I wish to show, that is a self-driving car, जो हमने यहाँ पे बात की है. You can see here, this is the example of self-driving car. जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिलेटेड हमने अभी जस्ट बात की है. सो कार इज ड्राइविंग बाय इट्स ओन, राइट. सो यहाँ पे बंदा सिर्फ बैठा हुआ है, कार अपने आप ड्राइव हो रही है, जीपीएस के थ्रू रूट डिसाइड हो रहा है, राइट. सो बट ऑब्वियस है, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ये कार की प्रोग्रामिंग करेगा तो बट ऑब्वियस है वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत अच्छी कोडिंग करेगा, right? So you can see this is driving this car, and yeah, very important things you might be knowing this particular person, right? So ये बंदे ने अपने मूवी आयरन मैन के अंदर जो टेक्नोलॉजी की बात की थी, that will be the future. You can see the key to future is here, how he has made the Iron Man show. So right now we are talking about that technology, and bootcamp is organized just to make you aware about that technology. Let's have a glimpse of that.
We used to call it as augmented reality, one of the important aspect of computing field. See, at one particular side, you can observe that one robot is there. It is continuously observing and monitoring this person, and now this person is building something just with the help of his hand, right? They don't need any other aspect to build this. सो जब ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे मुझे भी लग रहा था कि ऑल दिस थिंग्स आर काइंड ऑफ फेक थिंग, राइट? बट द वे इन विच द टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग, द वे इन विच द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, right? Within the span of 3 to 4 years, you might see this technology in front of you. It's augmented reality. So augmented reality is again integrated in major industries of mechanical, chemical, civil, and electrical industries. So this is some glimpse about the future technologies. So who plays a very important role for the growth of this future technology? So government of India's the prime agenda, the prime vision is Startup India. यहाँ पे इन स्टार्टअप इंडिया मिशन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग grant for the development of any product or to start your own firm. And as Latesh has stated that RNG Patel Institute of Technology has their own student startup and innovation policy cell. तो ये cell
give me opportunity to deal with that. So uh, uh, right. So for some time, I put myself on hold, and let's wait for the expert for the second session. So within 5 to 10 minutes, we will start with second session. हाँ बोल. Yeah. So Audible, sir? I think there might be some problem Hello. during the last portion of my presentation, but major aspect हमने already cover कर लिया था, right? We were discussing about only student startup and innovation policy. So अगर स्टूडेंट आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया और कुछ भी है, और अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू RNG Patel Institute of Technology for the same aspect. So now let's start with our second session, and for second session we have Mr. Manthan Patel with us. So Manthan is the uh, just give me a moment. Audible. Hello. Am I audible? Yes, Manthan, are you able to hear my voice? Hello. Manthan. એટલે તું તારું સેશન ચાલુ કરી દે. Right. So good afternoon, students. So now we have with us Mr. Manthan Patel for second session. He is the prestigious alumni of Computer Science and Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology, and Manthan is currently working as a senior web developer
in Escrow Infotech Surat. He has a wide experience about web development, and today he will enlighten us and he will explore the basic concept of web development to all of you. Over to you, Manthan. So he is trying to connect. So just give us a while. Within 3-4 minutes, we will start this session. So, dear students, I think we need to wait for more 2-3 minutes, just because Manthan is facing some technical problem. So we'll try to resolve it.
Yeah, so Manthan is back with us. So I request Manthan to please continue with your session. Okay, guys. Today we are here for a web designing boot camp. Okay, and today we are going to cover HTML and CSS based web designing. And I am going to share my screen. Uh, Wait a minute. Hope, Hopefully my screen is visible right now. Right? Okay. Yes, yes, okay. Okay. So we are starting from the web designing basic. Today we are going to cover HTML elements and CSS types. As you can see in this my notes, and I will also share these notes to you guys, students, so you can easily do practice by your own. ओके सो हम आज ये HTML और CSS बेस पे वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं एंड एंड ऑफ द सेशन what is our output is I am showing right now. As you can see, we will develop these three screen and we also redirect this screen to each other. Like समझ लीजिए कि लॉगिन वाली स्क्रीन है, तो मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगी होम पे, और अगर मैं लॉगिन से क्रिएट अकाउंट पे जाना चाहता हूं तो मैं वहां पे भी रिडायरेक्ट करूंगा. So we have seen many websites like see today I am going to take a demo of RNGPIT website. Okay, so many times you have seen website like this. So many of you do not aware about things के HTML या CSS से कैसे ऐसी websites बन सकती है. Okay, so today we are going to make this kind of dialog box. As you can see in my design, this dialog and this dialog is similar to each other. Okay, you can put any content inside that. So maybe some of you aware about HTML basics, but currently we are starting from the start only. So let's start with the elements of HTML. As we know, as we all know कि हमारा HTML का structure कैसे होता है, उसमें रहता है पहले doc type HTML. So what is the doc type HTML is that कि वो एक टैग है जो डिफाइन करता है आपके HTML का सिंटेक्स और जो भी कुछ लिखने वाले हो वो करेक्ट है कि नहीं, सिंटेक्स चेकर काइंड ऑफ रहता है. ओके, तो कभी वो उसका कोई जरूरत नहीं है, अभी वो आप नहीं भी लिखोगे तो उसका कोई मैटर नहीं करेगा. ओके, एंड साइड बाय साइड हम हैंड्स ऑन भी करेंगे. जो भी मैं कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका क्या आउटपुट आएगा वो भी हम आज देखने वाले हैं साइड बाय साइड. ओके, so first of all we go through this HTML page. Okay, now it's clear, I guess. Okay, in HTML, as we know, HTML contains lots of tags. Okay, and that tags has each tag has its own functionality. हर एक टैग की कुछ अपनी फंक्शनैलिटी है. तो जब भी आप कोई भी HTML, अभी समझ लो आपको इस टाइप की वेबसाइट बनानी है, ठीक है,
तो आप कभी भी ऐसी वेबसाइट में जाके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, वो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 डॉट्स में जाके मोर टूल पे डेवलपर ऑप्शन टूल्स सिलेक्ट करोगे तो आपको एक इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। उसमें ये एलिमेंट्स वाली टैब में जाना है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा कुछ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें HTML में है। एज यू कैन सी यहाँ पे HTML टैग है, यहाँ पे हेड टैग है, यहाँ पे बॉडी टैग है। तो ये सारी वेबसाइट बनती ये बेसिक HTML बेस UI से ही है। ये जो भी आप UI देख रहे हो वो HTML बेस है सारा का सारा। तो अब इनिशियली हम ऐसा ऐसा कुछ स्टार्टिंग से नहीं बना सकते, राइट। तो हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बेसिक के लिए ऐसा कुछ फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं आज, जिससे आपको आगे फर्दर हेल्प होगी वेबसाइट डेवलप करने में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग, लेट्स डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। सो जब भी आप HTML स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहला जो टैग रहेगा वो आएगा HTML टैग इटसेल्फ। तो मैंने जैसे कहा मैंने कि ये वाला टैग आप लिख सकते हो, बट अभी नहीं भी लिखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रिमूव भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ HTML लिख रहे हैं। और एक चीज है HTML में, जब भी आप HTML में कोई भी टैग स्टार्ट करते हो तो उसको एंड करना जरूरी है, वरना वो उसका स्कोप चलता ही जाएगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो कैसे प्रॉब्लम करता है। बट अभी के लिए कभी भी आप वेब डिजाइनिंग में जाना चाहते हो या HTML बेस्ड वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको कोई भी टैग जब भी आप ओपन करते हो उसके साथ ही उसको क्लोज कर दो, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है आप लिखो। अदरवाइज क्या होगा, जब बहुत बड़ा कोड रहेगा तब आप ये वाला टैग लिखना भूल गए तो मे बी इट विल कॉज अ प्रॉब्लम इन योर वेब डिजाइनिंग, ओके। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको जब भी कोई टैग स्टार्ट करो तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं HTML। सो कभी भी कोई भी वेबसाइट हो आपकी जो HTML बेस्ड वेब डिजाइनिंग के ऊपर हो तो वो हमेशा स्टार्ट होगी HTML टैग से ही। आप कोई और टैग से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो टैग रिक्वायर रहेगा वो है HTML टैग, ठीक है। As you can see HTML, this is a wrap up all contents of entire page। मीन्स आपका सारा जो पेज का कंटेंट है वो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका HTML टैग। अभी जो भी जैसे हमने सेंटेंस में देखा कि आपका सारा कंटेंट इसमें ही आएगा, ठीक है। तो उसकी हायरार्की क्या है, तो HTML के अंदर एक रहेगा हेड टैग। अभी मैं देखो आप मैं मेरी प्रैक्टिस कैसी है, मैं हमेशा जो भी टैग स्टार्ट कर रहा हूँ उसको पहले खत्म कर रहा हूँ। हेड टैग है और दूसरा जो है वो है मेरा बॉडी टैग, ओके। So everyone know in human we have a head and we have a body, okay। That's like similar way HTML has a head or body, okay। So whatever logical operation we are doing as a human वो हमारे सब हो रहे हैं हेड में। तो उसमें सिमिलर वे HTML में जो भी हेड टैग में रहेगा वो पूरा जो डिजाइनिंग का जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा, क्लासेस, आईडीज, जो आप शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा बट मैं अभी थोड़ी ही टाइम में समझाऊंगा वो क्या होता है। क्लासेस आईडी, स्टाइल है, जावास्क्रिप्ट है, तो वो सब आएगा आपका हेड टैग में, ठीक है। और जो बाकी के एलिमेंट है जिसमें हम बटन बनाने वाले हैं कि हम जहाँ पे फील्ड बना रहे हैं जहाँ पे यूजर डेटा एंटर कर सके, ठीक है, फॉर्म बना रहे हैं, तो वो फॉर्म वाला डेटा सब हमारा आएगा बॉडी टैग के अंदर। होपफुली यू कैन विजिबल दिस थिंग, ओके। So inside the head tag, as I have mentioned, many elements we can add, okay। So inside head tag, the first element we can add is the meta one, okay। So many of you thinking what is the meta, okay। So meta is a nothing but data about data. Means suppose you want to describe your website or if you want to score your website on Google ranking, then meta tag is very useful। हम देख सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे RNGPIT सर्च करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले यही वेबसाइट क्यों आ रही है, कोई और नहीं आ रही है। अभी आप समझ लो कल उठ के आप भी कुछ यही इस टाइप के डोमेन पे बना रहे हो बट वो आपकी पहली नहीं आएगी, क्यों,
क्योंकि मेटा टैग कंटेन्स एलिमेंट्स विच इज डिस्क्राइब द वेबसाइट, वो चीज आपको कहीं पे भी बाहर नहीं दिखेगी। लाइक अभी आप इसकी वेबसाइट देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी मेटा टैग का मेंशन नहीं दिखेगा, देखो, ठीक है। वो चीज किस चीज के लिए है? जब भी आपको गूगल की रैंकिंग अप लानी है, आपको यहाँ पे यूजर सर्च करे और आपका वेबसाइट अप लाना है, तो कीवर्ड वगैरह आपको लिखने हैं, तो उसके लिए मेटा टैग का यूज होता है। तो मेटा टैग में भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। As you can see here in temporary file, I have mentioned all these tags. Currently in today's session, we are not going to use all of these. Okay, so that's why I have not mentioned in hands-on one, but I'm going to show you these things. See here, as you can see, there is the description. All these are the meta tag, as you can see, highlighted one. So here it's a description, keywords, author, viewport. Okay, so description contains the description of your website, means your website is about what. Keywords means, as I told you, whenever you want to make your website upscale, right? So suppose if I am entering this RNGP, okay, PI. So still it is going to show you that RNGPIT website only. Why? Because they have added this word inside this keyword section. Okay, like this, RNGPI. So like this, you can add many words inside this, so you can score more on this Google ranking. Okay, that's why this meta tag is used. Okay, hopefully you all get understand this thing properly. Now we are coming for a next part of our, okay, the next thing is the title one. Okay, and one more thing, we are going to save this website whenever you are starting with the notepad or something, any other editor. Currently I am using Atom. Okay, so whenever you are starting in notepad only as well, whenever you are saving your file, you have to mention your extension. Like suppose I am going to save this website. Okay, so whenever I am saving this, I have to mention name of website. Currently I am giving it index name. Okay, then .html. That .html thing is mandatory, because if you are not writing .html, then that particular system not understand which file you have made. Okay, so always keep this thing in your mind. Save as type should be all files, and the name should be whatever the name you want to enter, like demo or whatever the index or whatever your name. Okay, and then after .html is the mandatory thing. .html is the extension of our file. So whenever I am saving this file, okay, now you can see if I am going to the folder, see, it will directly gives me, see, as you can see, my doc type is HTML1. It is only comes whenever you are putting this .html extension whenever you are saving your file. Okay, so now what is the title tag? See, keep that thing in your mind. Currently we are writing all code inside the head portion only. Okay, we are not writing anything inside the head. Okay, so wait a minute. Okay, the head portion we are writing all things. Inside head we started with the meta. Now the second one comes is the title. So what is the title? Suppose I am writing my name, that Manthan. Okay, so where this name is comes, as you can see, you have seen many websites which is indicate from here. See, currently I am going through this RNGPIT. As you can see, this name coming over here. Okay, see, this website has a different name, this StreamYard has a different name. Okay, different website has a name. Okay, so if you want to change this name now, so that time you have to add title tag. See, I am going to run this index file inside my browser, so you can know that thing. See, I am going to open this one. See, as you all can see, that title is Manthan right now. Suppose I want to change my title. Suppose I don't want to my title be like Manthan. Okay, so always title is similar to whatever you want to show as a website. Like आपकी website क्या है उसके बारे में title रहेगा. So समझ लो हमारा web design base है.
वेब डिजाइन बूटकैम्प बेस है। ओके, तो मुझे वेब डिजाइन बूटकैम्प नाम रखना है, मैं सेव कर रहा हूँ। एवरी टाइम वेन एवर यू आर डूइंग एनी चेंजेस यू हैव टू सेव, then and then you have to run this website, that page link again. See, my name is website design, as you can see, website design bootcamp. Okay, so that's how it is working right now. Okay, so now this title name is clear, I guess. Okay, now we go for another element. We have covered HTML tag, we have covered head tag. Inside head tag, we have entered the meta tag, we have entered the title one, and now we are coming to the body part. Okay, so what is the body part? Whatever the element you are seeing right now here inside this website, these all parts coming inside the body part. Okay, suppose currently I am writing one tag inside the body part. Please keep tracking of these tags, because if you are not tracking, suppose if you are writing this thing here, then it will not work. So head portion is completed right now, so do not touch that right now. Okay, head portion is completed. Now we are moving to the body part of our HTML. Okay, see, body part. Now I am entering one tag, which is the h1 tag. It is called heading 1. Okay, so I am entering web design bootcamp. Okay, so I am writing this tag inside body type. Please keep tracking these tags. Okay, so you have not do any mistake later on. So inside body part I am writing this h1 tag. Okay, and now I am saving this my changes, and जब भी मैं यहाँ पे देखूंगा रिफ्रेश करके, सी नाउ यू कैन सी दिस title is coming here. Whatever you are writing inside the body, it will display inside your page, and whatever the unnecessary part like the title, meta, here also other things coming inside the head part, which is the script, and another one is the style that we will see later on. Okay, so as you can see, I have mentioned web design bootcamp, and now you can see on my page. Okay, see what is now, whenever you want to give any heading to your tags, so you can mention h1 to h6 tags available for heading. H1 is a most bigger one, and the H6 is the most smaller one. Whenever I am writing H6, okay, as you can see, whenever I am if I am changing my H1 tag to H6 one, so जब भी मैं वो चेंज करूंगा, आप देखना ये वाले चीज में क्या, इस वाले टेक्स्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सी, ये अभी छोटे हो गए, ठीक है। तो वो चीज आप H1 से लेके H6 वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। तो वैसे आप आपका टाइटल डिसाइड कर सकते हो। करंटली मैं अभी H1 के थ्रू ही जाऊंगा। ओके, सो नाउ माय टाइटल इज अ वेबसाइट डिजाइन बूटकैम्प। ओके, नाउ व्हाट अदर एलिमेंट्स वी कैन ऐड इनसाइड दैट? We can add paragraph, or we can say the text. Okay, something, so suppose I want to describe what is the session is about, so I can describe here, like, see, inside the body part, whatever the operation we are doing, if we are doing inside the body part only. Okay, so this is a HTML and CSS bootcamp. Okay, so this is the P. P means paragraph. You can say this P means the paragraph tag. As you can read here, it's a paragraph tag. So in paragraph tag, whatever text you are writing here, it comes as it is. Means it will not make it bigger or smaller, something like that. It will save. It will display that tag as it is. I am saving these changes, and you can see those changes here. आप देख सकते हैं, सी, ये वाला अभी अब मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज आ गया है, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं हुआ है।
तो जब भी आपको कुछ टाइटल देना है तो आप H1 to H6 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको कुछ कंटेंट लिखना है तब आप पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको यहाँ लाइव वेबसाइट में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे किस चीज का यूज हुआ है। देखो ये वाली जो चीज है वो एक हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हुआ होगा हेडिंग टैग का, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लेटेस्ट न्यूज वाला जो क्लिक किया है उसमें H5 टैग यूज किया है, तो वो हेडिंग टैग है। और जब भी मैं कोई टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो रहेगा पैराग्राफ टैग, एज यू कैन सी हियर, सी, आई गेस एवरीबडी कैन सी दिस, सी, it's a paragraph thing, okay. I am moving my cursor over here, okay. So this text is a paragraph one, and whatever title you are giving is a header one. So now, as you know, now you are know how we can write title and how we can, how we can add the title and हम कैसे heading और content दे सकते हैं। अभी सपोज मुझे कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होगा लिस्ट, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है अनऑर्डर लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट, ओके। तो वो कैसे यूज होगा, सपोज मुझे कुछ अनऑर्डर लिस्ट के लिए अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ऑलवेज कीप दिस थिंग योर माइंड, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट बन गई, ठीक है। अभी उसके लिए मुझे एलिमेंट्स डालना है, तो उसके लिए आएगा li टैग, लिस्ट एलिमेंट, ओके, लिस्ट आइटम, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, और आई कैन सी मैं लिख रहा हूँ HTML, और फिर मैं वापस से ये वाला टैग का कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ CSS, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ JS, ओके। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इसका क्या आउटपुट आएगा आप देखिएगा, सी, हमने अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट डाला है, इस वजह से वो यहाँ पे डॉट दिखा रहा है। सपोज आपको कुछ नंबरिंग वगैरह डालने हैं, तो आपको सिंपल ये जो यूएल है मींस अनऑर्डर लिस्ट है, उसको कन्वर्ट कर देना है OL में। OL मींस ऑर्डर लिस्ट। तो जैसे ही आप उसको OL में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप देख पाओगे कि वहां पे नेम नंबर आ जाएंगे, सी, ओके। तो ये चीज से आप लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो। अगर यहाँ पे होगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, सी, यहाँ पे जो ये वाली लिस्टिंग की हुई है, तो वो वैसी लिस्टिंग आप वैसे कर पा सकते हो ऑर्डर लिस्ट से या अनऑर्डर लिस्ट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं लिंक, हाँ। तो अभी हमने कई बार देखा होगा, जब भी हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो हमें वो रीडायरेक्ट करता है किसी और पेज पे। समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट पे, ये डिपार्टमेंट में मैं कोई वेबसाइट पे, देखो वेट अ मिनट, मैं डिपार्टमेंट में समझ लो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये पेज कहीं और जा रहा है। तो हमें वो पेज को रीडायरेक्ट कैसे करवा सकते हैं, वो वाली चीज हम सीखेंगे। तो उसको HTML में कहते हैं लिंक, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं और लिंक भी कहते हैं। तो अभी आप वो वैसी लिंक कैसे बना सकते हो, तो ये जो भी टैग मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, वो सब टैग की सिंटेक्स है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारे टैग हमें याद कैसे रहेंगे या इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ये सब सिंटेक्स है, और सिंटेक्स को आपको हमेशा याद करना रहेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म ही आपको डिफाइन कर देंगे कि वो चीज क्या है। लाइक UL डिफाइन कर रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL डिफाइन कर रहा है ऑर्डर लिस्ट, P मीन्स पैराग्राफ, H1 मीन्स हेडर 1, ठीक है। तो वो सेल्फ डिफाइन है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और आप बिना किसी चीज को देखे आप वो चीजें लिख पाओगे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं लिंक के साइड को। लिंक के लिए है ए टैग, ए टैग का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए में क्या रहता है, ए में रहता है कि हमें दो स्टार्टिंग और एंडिंग ए टैग के बीच में हमें लिखना रहेगा अपने लिंक का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML bootcamp लिंक, ओके।
अभी यहाँ पे लिंक में मुझे अभी ये वाली चीज खत्म हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने दोनों टैग के बीच में ये वाला टैक्स लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे लिंक तो आया बट उसका कोई क्लिक किया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि जहां से मैं रीडायरेक्ट हो सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिंक देना पड़ेगा कि मुझको ये टेक्स्ट को कहाँ लिंक करवाना है। तो उसके लिए रहेगा href टैग, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें लिंक डालना है कि हमें ये वाली चीज को कहाँ रीडायरेक्ट करना है। समझ लो मैं ये वाली वेबसाइट का लिंक ले रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने यूआरएल से, ठीक है। तो अभी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ चीज को, देखो मेरी लिंक यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और ये वाली चीज आपको स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखनी है। ये दोनों टैग के अंदर नहीं लिखनी, सिर्फ स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखनी है। आप देख पा रहे होंगे ये स्कोप, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये चीज को सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद आपको ये वाला टेक्स्ट ब्लू दिखने लगेगा, सी, ओके, एंड अंडरलाइन इज ऑल्सो कम्स। तो whenever I am clicking on this, see मैं क्लिक कर रहा हूं, तो वो क्लिक करके फिर क्या हो रहा है, देखो ये ओपन हो गया जो भी वेबसाइट है वो, ठीक है। अभी समझ लो आपको ये वाली वेबसाइट ओपन नहीं करनी, मुझे ओपन करना है google.com, ठीक है। मुझे ये वाली पेज को ओपन करना है, तो यू कैन चेंज एज यू वांट। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ href टैग के अंदर का कंटेंट बदल रहा हूँ, देखो मैंने ये यूआरएल बदल दिया। अभी मैं इसको वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी मैं जब भी क्लिक करूंगा तो वो कहाँ पे जा रहा है, गूगल पे। दैट्स हाउ यू कैन रीडायरेक्ट योर पेजेस, ओके। यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए होंगे, और जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दैट link, or we can say the hypertext is working, okay। तो ये वाली चीज हो गई लिंक वाला। तो अभी आप सबको मालूम है कि हम रीडायरेक्ट कैसे करवा सकते हैं, href टैग के थ्रू हम रीडायरेक्शन करवा सकते हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे, लिस्ट हो गया हमारा, लिंक हो गया, ठीक है। अभी हम जाएंगे css की तरफ, ओके। because CSF is a thing which is the most important one whenever you are doing web designing, okay। so web designing के लिए CSS is a first and initial step, आपको वो चीज आनी ही चाहिए। तो हम CSS के और बढ़ते हैं, हम हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इसमें। let's go for a CSS one, and don't worry, I am going to share both of these document to you, okay, so you can do practice by your own, and whenever you need any reference you can go through it. See, in CSS which topics we are going to cover is inline CSS introduction, CSS type, inline CSS, internal CSS, external CSS, and overview of Bootstrap, okay. Don't worry, I read it very fast, but I am explaining all these things to you right now. So CSS is nothing but the cascading style sheet, maybe you all know these kind of things. Now how we can apply the CSS, that is the important thing, that's why we are here, okay. So as you know, I have mentioned two tags inside my head, like as you can see. Now that we are not focusing on a body part right now, we are leaving the body part, okay. Again we come back to the header portion, okay. Inside the header portion, what we are doing, we are going to add a style. We are not going to add script is for JavaScript, but currently we are focusing on the web designing, so we have to learn CSS first. So inside the head tag, as you can see, this head tag is over here. So inside the head tag portion, we have to set that style tags, okay. So style tag define the style property of the CSS. So how we can styling our tags is, suppose like I want to style my this h1 tag, okay. So how I can style that, okay. So
what I am going to do is that I am writing the name of my tag, which is the h1. I am opening and closing curly braces. Okay. Now what I am, there is some property of CSS that you have to memorize. Currently I am changing the color of my h1 tag. So I am changing color and double colon, and then after I am mentioning color of yellow. Okay. Now I am closing the thing. See, this is the Terminator operator. Whenever you are writing any attribute inside the inside your style property, okay, inside your styling tag, you have to mention which property you want to change or which attribute you want to change, what for what color or whatever the background you want to enter. According the property you have to set its value. Like colors, we have to set color only, we can't set any image or something like that here. And after setting up this thing, we have to close this thing, because maybe here other property can comes. That's why we are terminating this color property by semicolon. Okay. So now first of all we will see कि हम ये जो चीज है वो कैसे वर्क कर रही है. देखो अभी मैंने ये चीज सेव कर दी है. मैं अगेन जा रहा हूँ अपने सी, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो अभी ब्लैक कलर में है, एज यू कैन सी. अभी मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ. सी, कलर हैज बीन चेंज. तो वो कैसे हुआ? लाइक ये वाले जो टैग है तो मैंने उसको कस्टमाइज कर दिया है. ठीक है, कि मुझे ये जहां जहां भी h1 टैग रहेगा वहां वहां मुझे उसके टेक्स्ट का कलर चाहिए येलो. अभी मुझे येलो नहीं पसंद है, मुझे रेड करना है. ठीक है, ताकि वो विजिबल हो, तो मैं यहां से कर दूंगा और नाउ इट बिकम्स अ रेड वन. अभी मैं जहां जहां भी h1 टैग लिखूंगा, समझ लो ये है मेरा सेकंड टैग, सेकंड h1 टैग, ये है HTML bootcamp. ओके, अभी ये वाले आप क्या सोच रहे हो कि ये वाले में आएगा या नहीं आएगा? लेट्स सी. तो वो कैसे आया? बिकॉज हमने सारे h1 टैग को वो वाली प्रॉपर्टी दे रखी है. अभी कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि हमें वैसी चीज नहीं करनी, हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देना है. तो उसके लिए हमें जाननी पड़ेगी कि स्टाइल कितने टाइप्स की होती है. ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट के थ्रू. तो स्टाइल जो होती है वो 3 टाइप की होती है. एक होती है इनलाइन सीएसएस, दूसरी होती है इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, और तीसरी होती है एक्सटर्नल सीएसएस. ओके, सो जो हमने अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस. इसको हम कहते हैं इनलाइन नहीं, embedded CSS, or you can say the internal one, और embedded. ये वाली CSS को हम कहते हैं internal और embedded CSS. ओके, अभी इंटरनल तो आपको समझ आ गया कि वो हमें हेड टैग के अंदर लिखना है. ठीक है, अभी हमें सीखना है उसका फर्स्ट टाइप, विच इज द इनलाइन सीएसएस. जो ये वर्ड है वो इट सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि इनलाइन मतलब आपको इस टैग के अंदर लिखना है, इनलाइन मतलब उसी लाइन के अंदर लिखना है आपको. ठीक है, तो समझ लो कई लोगों को क्वेश्चन था कि भाई हमें ये h1 टैग दोनों में अलग अलग कलर चाहिए, बट हमने तो यहाँ पे एक ही कलर दे दिया है, तो मैं दूसरे में डिफरेंट कलर कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. ठीक है, तो समझ लो मुझे ये वाले में डिफरेंट कलर चाहिए, ये वाले में मुझे चाहिए येलो कलर. तो इनलाइन सीएसएस को आपको कैसे लिखना है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल. ठीक है, डबल इज इक्वल टू, और फिर मैं क्या करूंगा कि हमें जो भी है यहाँ पे हमारा स्टाइल लिखना है. जो भी हमने स्टाइल यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने टैग डिफाइन किया था. बट यहाँ पे टैग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज हम अभी उसी टैग के अंदर लिख रहे हैं, तो HTML को पता है कि आपको यही वाला टैग चेंज करना है.
ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट रहेगा आपका स्टाइल, ओके, और स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी आपका एट्रीब्यूट चेंज करना है, लाइक मुझे अपना कलर चेंज करना है और उसको येलो करना है, सिंटेक्स यहाँ पे सेम ही रहेगा, जो भी आपका एट्रीब्यूट चेंज करना है उसकी वैल्यू और सेमीकोलन उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, उसका स्कोप खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे वो मैंने चीज कर ली है और यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ। एज यू कैन सी करंटली बोथ आर रेड, एज यू कैन सी कलर ऑफ HTML इज चेंज नाउ, ये हो गया येलो। अभी आपके मन में शायद सवाल होना चाहिए कि हमने दोनों स्टाइल अप्लाई किया, ठीक है, तो ये वाला अप्लाई क्यों नहीं हुआ इस पे, ये भी H1 टैग है, ये भी H1 टैग है, इसमें ये वाला ही क्यों अप्लाई हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीजन है, वो मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहूंगा। होपफुली यू कैन सी दिस इमेज। अभी ये है CSS प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्या रहता है कि सबसे पहले क्या प्रायोराइज है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज है कि ये तीन हमारी CSS के टाइप है, जैसे मैंने मेंशन किया कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज है। तो प्रायोरिटीज लो टू हाई आप दे सकते हैं कि सबसे लो प्रायोरिटी है एक्सटर्नल CSS की, बाहर का। ये इट इज लाइक सेम कि हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स है उनका हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, लाइक इनलाइन जो एक ही लाइन में है, लाइक हमारे घर में है, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। इंटरनल मींस मतलब हमारे अंकल हैं, उनको हम सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो हमारे जो भी हमारा जो समाज है उसके अंदर है, तो उनको हम सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। और थर्ड प्रायोरिटी मतलब जो हमारे समाज में नहीं है, हमारे घर के बाहर के लोग हैं, ठीक है, तो हम उनको लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। सेम वे CSS में है कि घर जो इनलाइन है, मतलब जो लाइन के अंदर है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे येलो कलर चाहिए और ये दोनों बोल रहे हैं कि ब्लू और रेड, तो वो सिर्फ इसकी ही सुनेगा, इनलाइन की ही सुनेगा। अभी हम समझ लो कि मैंने इनलाइन CSS नहीं लिखा है, बट इंटरनल और एक्सटर्नल CSS लिखा है, तो वो पहले इंटरनल की सुनेगा, एक्सटर्नल की नहीं सुनेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ प्रायोरिटी डिसाइड कि लो टू हाई प्रायोरिटी जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी इनलाइन की, जो ये बोलेगा वो सबसे पहले होगा, ये वाली चीज बाद में होगी अगर, और ये वाली उसके भी बाद में, तो ये वाली चीज सबसे प्रायोरिटी में रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो चीज है वो येलो हो गई इंस्टेड ऑफ रेड, ओके। तो अभी हम थर्ड चीज देखने जा रहे हैं। हमने ये देख लिया इंटरनल CSS, ठीक है, और ये वाला हमने देख लिया इनलाइन CSS, और अभी हम थर्ड देखने वाले हैं, वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल इट सेल्फ डिफाइन कि हमारी जो भी CSS है वो बाहर से होगी, ये वो इस फाइल में से नहीं होगी। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी कोई फोल्डर है, हम क्या करेंगे, उसके लिए एक न्यू फाइल लेंगे, ठीक है, और हम इसको सेव करेंगे। अभी इस टाइम पे आपको सेव HTML नहीं करना, हम CSS बना रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डॉट, और अभी आपको डॉट मैंने बोला HTML नहीं देना, क्योंकि हम CSS बना रहे हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो हमें अभी क्या डिफाइन करना है, CSS, ओके। तो ये डिफाइन करेंगे और इसको हम सेव करवा देंगे, ठीक है। अभी ये वाली फाइल में हम ये चीज लिख देंगे H1 वाला, ठीक है। अभी अभी H1 में तो हम वो लिखेंगे तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑलरेडी इनलाइन और इंटरनल ने डिफाइन H1 किया हुआ है। तो लेट हम उसमें पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ का P, ठीक है, और उसका कलर मुझे अभी चाहिए रेड, ठीक है। तो मैंने एक्सटर्नल में ये डिफाइन कर दिया, बट वो चीज यहाँ पे आएगी कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली हमारी हो गई इंटरनल CSS, ठीक है। अभी हमें कोई एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करनी है,
तो उसके लिए टैग रहेगा लिंक, मतलब हमें उसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक href external .css, जो भी नाम हमने यहाँ पे रखा है वही नाम हमें देना है, और यहाँ पे हम उस टैग को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अभी ये चीज को हम सेव कर रहे हैं, और अभी देखो पैराग्राफ का टेक्स्ट है ब्लैक। अभी लेट्स सी कि वो एक्सटर्नल हमारे यहाँ अप्लाई हुई कि नहीं। वो नहीं हुई है बिकॉज मे बी सिंटेक्स में कुछ एरर रही होगी, सिंटेक्स में कुछ एरर रही होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, मैं ये चीज फॉरगॉट कर गया लिखना। हमें क्या करना है, href के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट रहेगा rel स्टाइल शीट। मतलब रिलेशन क्या है, एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ए टैग में भी href लिखा था, और यहाँ पे भी href क्या डिफाइन कर रहा है कि आपकी कोई भी बाहर की फाइल है उसका लिंक डिफाइन कर रहा है, तो वो href है। ठीक है, और rel क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशन, कि आपकी ये जो लिंक है वो किस बारे में है। तो हम वहां उसको बता रहे हैं कि वो हमारी स्टाइल शीट है। ठीक है, और ये वाले चीज में आप कुछ और नहीं लिख सकते, आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, CSS, okay. See, now my text is become a red one. Okay, so अभी क्या हुआ, हमने एक्सटर्नल CSS में जो P पैराग्राफ में कलर किया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे ना ही मैंने P में कुछ डिफाइन किया है, ना ही मैंने यहाँ डिफाइन किया है। मैंने जो भी कुछ डिफाइन किया है कहाँ पे किया है, बाहर की साइड। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे वो सब डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पे एक्सटर्नल क्यों बना रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि हम जब भी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं लाइक दिस वन, जैसे हमने ये देखा यहाँ पे हमने RNGPIT, अभी इतनी बड़ी वेबसाइट में बहुत सारी टैग रहेंगे कि कौन सा कलर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सभी चीज एक फाइल में नहीं रख सकते, वरना हमारा लाइन ऑफ कोड है, मतलब जो फाइल की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन यूजिंग एक्सटर्नल CSS, ताकि आपका जो लाइन ऑफ कोड है, मतलब समझ लो मैं ये चीज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरा लाइन ऑफ कोड है जो कम हो गया। मुझे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है सारी चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए, तो वो चीज होती है। ठीक है, तो इसी वजह से सभी लोग इन टुडे डेट एवरीवन यूजिंग एक्सटर्नल CSS। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको इनलाइन और इंटरनल यूज करना है आप कर सकते हो, इसीलिए हमने तीनों चीजें कवर कर ली कि आप कैसे कैसे उसको चेंज कर सकते हो। अभी आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं। अभी यहाँ पे समझ लो मैंने H1 टैग में ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये ब्लू कलर H1 में अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे अप्लाई हुआ, वेट अ मिनट। ओके, सी, यहाँ पे ब्लू टैग H1 में नहीं अप्लाई होगा। पहले अप्लाई क्यों हुआ था, क्योंकि ये वाली चीज मैंने इसके नीचे डिफाइन की थी, इंटरनल के नीचे डिफाइन की थी, इसी वजह से वो ब्लू हो गया था, बिकॉज पहले उसने ये वाला चीज रीड कर दिया था और फिर ये वाला। तो ऑलवेज कीप दैट थिंग इन योर माइंड। जो भी एक्सटर्नल CSS आप लिख रहे हो सबसे पहले लिखो, उसके बाद आपको लिखना है इंटरनल CSS, और उसके बाद ही आपको लिखना है स्टाइल CSS। स्टाइल CSS रहेगा टैग के अंदर, जो स्टाइल इनलाइन CSS है वो हेड टैग के अंदर रहेगा, और जो एक्सटर्नल CSS है उसका अलग फाइल बनेगा, और उसको हमें लिंक करना है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, समझ आ गया। तो ये वाली चीज अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ इसकी प्रायोरिटी लास्ट में है, तो इसी वजह से उसने इसकी नहीं सुनी। तो हम कैसे अलग ही टैग डिफाइन करेंगे P, और ये हो गया। ठीक है, पैराग्राफ अपना हो गया ब्लू। ठीक है, दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। अभी मैं हमारा जो मैं आपको बताने वाला था, जो कार्ड वगैरह बनाना है, वो मैंने उसी टाइप से बनाया है। ठीक है, ये जो है वो हमारी CSS है कार्ड वगैरह के लिए। जो फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया मैं उसको रन करके दिखाता हूँ।
अभी समझ लो हमें बैकग्राउंड में कुछ रखना है, इस टाइप का इमेज रखना है, तो हम वो कैसे रख पाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप वो चीज आप कैसे कर सकते हो। अभी जो भी आप चीजें रखना चाहते हो वो सेम फोल्डर में होनी चाहिए। लाइक सी, अभी ये वाली चीज, ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है, अभी वो वाली चीज मुझे ये वाले इंडेक्स में चाहिए, तो मुझे वो इमेज यहाँ पे रखनी पड़ेगी उसी फोल्डर में, अदरवाइज वो लिंक नहीं कर पाएगा, और एल्स आप उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी इंडेक्स वाले में मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो मैं ये वाले बैकग्राउंड में, ये प्लेन बैकग्राउंड है, उसकी जगह मैं वो इमेज कैसे सेट कर पाऊंगा? तो लेट्स सी, ये वाली चीज हम लिखेंगे बॉडी के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल का यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा कोड लेंथी हो जाए। तो बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, ये टाइप, इस टाइप के एडिटर, ये एटम एडिटर है, तो उस टाइप के एडिटर से फायदा क्या होता है, आपको ऐसी हिंट मिलती रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सिंपल नोटपैड वगैरह यूज करोगे तो उसमें आपको हिंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये एक बेनिफिट मिल जाता है जब भी आप ये ऐसी चीजें यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज ले रहा हूँ और उसका यूआरएल सेट कर दिया रहा हूँ, ठीक है। भी यूआरएल में मैं क्या सेट कर रहा हूँ, जो मेरी इमेज का नाम है एग्जाम्पल, ठीक है, वो वाला मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ example.jpg, ठीक है, जो भी मेरा एक्सटेंशन है वो। अभी ये सेट करके मैं देखूंगा कि मेरा इमेज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सी, मेरा इमेज चेंज हो गया, देख पा रहे हो आप? तो इस तरह से आप बॉडी के लिए बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और ये सेम चीज आप कहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ इंटरनल सीएसएस के स्टाइल में भी लिख सकते हो, ये भी सेम ही रहेगा, देखो, ठीक है। और कहाँ पे लिख सकते हो आप उसको, यहाँ पे, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे इतनी चीज की जरूरत है। अभी मैं इनलाइन में लिखना चाहता हूँ, तो उसका सिंटेक्स क्या है, हमें स्टाइल देना है, तो स्टाइल, और उसके अंदर जो हमारा बैकग्राउंड इमेज का जो एट्रीब्यूट का जो हमने लिखा था वो सेम रहेगा। ये भी आप देख पाओगे, वो भी अप्लाई होगा। एक मिनट, यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत है, मे भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बट वो चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। वेट अ मिनट, मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो आ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था, जो हमने हमने क्या किया था, यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड किया है और अंदर के साइड भी डबल, तो वो क्या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि दोनों चीज कौन सी है। तो ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड, हमने यहाँ पे जो भी सिंगल किया हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सिंगल या सिंगल कॉमा उसका अल्टरनेट यूज करना पड़ेगा। हम सेम चीज यहाँ अंदर की साइड यूज नहीं कर पाएंगे कोट्स में, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज हो गया हमारा। तो दैट्स हाउ दिस इंटरनल, एक्सटर्नल और सब सीएसएस ऐसे वर्क करेगी, ठीक है। अभी हम लेट्स क्विकली गो थ्रू हमने कैसे बनाया। वेट अ मिनट प्लीज। हेलो, am I audible? Hopefully. Uh, Okay, so today we have covered HTML and CSS both thing. Okay, तो आप आफ्टर CSS आप वो चीज नेक्स्ट बूटस्ट्रैप पे कैरी ऑन कर सकते हो। मे बी इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा सेशन रहेगा, देन वी विल डेफिनेटली कवर CSS ID एंड क्लासेस एंड बूटस्ट्रैप फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। बूटस्ट्रैप है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, लाइक अगर आपको
ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिव रखना है। मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे RNGPIT की वेबसाइट है। अगर मैं उसको मोबाइल व्यू कर दूंगा तो वो मोबाइल में भी सही दिख रही है। तो ऐसी चीज के लिए आप ये बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो। वो है सेट ऑफ लाइब्रेरी फॉर CSS, मतलब उसमें इनबिल्ट क्लासेस वगैरह सब है ही, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो। होपफुली आपको ये जो भी मैंने समझाया, बिकॉज ऑफ टाइम हम आज इतना ही कवर कर पाएंगे। और ये जो मैंने जो मेंशन किया यहाँ पे, ये जो क्लासेस हैं, मैं सिर्फ आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो मैंने पेजेस बना रखे हैं, ठीक है, ये वाले जो पेजेस, वो मैंने इंटरनल CSS के थ्रू बना रखे हैं। ये वाले देखो, आप देख पाओगे यहाँ पे स्टाइल में अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म वगैरह लेके यूज किया हुआ है। तो ये चीज आप फ्यूचर पर्पस के लिए रिफर करना, और आपको सारी चीजें समझ आ ही जाएंगी कि वो कैसे यूज होगा। ठीक है, hopefully you understand how this style property works in different types. Okay, और मेटा टैग और टाइटल ये सब आप समझ पाओगे होपफुली। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल में लॉगिन नाम दिया है, तो वो यहाँ पे लॉगिन ही है। ठीक है, और रीडायरेक्शन के लिए मैंने आपको सिखा दिया है, यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट है उस पे मैंने लिंक रखी हुई है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट है, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज में मैंने लिंक रखी हुई है register.html की। इसीलिए वो क्या करेगा, जब भी मैं क्लिक करूंगा वो रजिस्टर पे चला जाएगा, और जब भी मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा वो अगेन लॉगिन पे आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने लॉगिन पेज का किया है। और यहाँ पे कुछ भी लिख के ही सक्सेसफुली यहाँ पे भी रीडायरेक्शन ही किया है ए टैग से और href लिंक देके। ठीक है, तो होपफुली टुडे सेशन you have enjoyed, and it's give some education about the CSS and HTML, and it's useful for your future purpose. Okay, thank you all of you for listening me. Okay, sir. Thank you, Manthan Patel, for very good session on importance of web development. जो भी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है वो सभी चीज़ें आपको मेल थ्रू हम शेयर कर देंगे. I wish to share that Manthan is associated with our institution to provide vocational education. So I hope students you have enjoyed his session. Thank you once again, Manthan. Thanks a lot. So now let's move towards our second session. And for second session today, third session. And for third session, we have Mr. Vishal Vadhiyar with us. And along with Vishal Vadhiyar, we have Mr. Jitendra Chaudhary, sir, Dr. Jitendra Chaudhary from Mechanical Engineering Department, as well as Training and Placement Officer of RNG Patel Institute of Technology. So Mr. Vishal Vadhiyar is a business development manager at Shriji Technoaspire Private Limited, Gandhinagar. He has helped to develop Patel Tinkering Lab to different schools like uh, Gupta High School, Maua, KNB High School, Alipur, Pattai High School, Nanipora High School, Vidyamangal High School, Pardi, and many more. He is also engaged in providing training and innovation club training at different innovation club all over the Gujarat to different schools and institute. So on behalf of RNG Patel Institute of Technology, I heartily welcome Mr. Vishal Vadhiyar and Dr. Jitendra Chaudhary, sir. Now I request Vishal sir to please continue with your session. Vishal sir will enlighten us with his knowledge regarding IoT and robotics. Over to you, Vishal sir and Jitendra sir. स्टार्ट કરી શકીએ સર? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. You can start now, sir. ઓકે, હું જરાક શેર કરી દઉં મારી સ્લાઇડ.
ઓકે આઈ થિંક સ્ક્રીન શેર થઈ ગઈ છે જીતેન્દ્ર sir? Yes, sir. Hello. Your screen Yes, is sir. already Yeah. shared. Yes. So So your voice is somewhat low. If you can manage your headphone. હા Yes, હવે yes, હવે sir. અવાજ આવે છે સર? Yes, yes, sir. Now your voice is audible. Sir, our ઓકે. audience are from different states too. So if we can prefer Hindi along with English, then it यस will be यस great. हम हिंदी प्रेफर ज़्यादा प्रेफर करेंगे. Sure, sure. Over to you, बेसिक sir. यस यस थैंक यू सर. बेसिक हम स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज IoT मेन थिंग. ठीक है. तो IoT क्या है? IoT मीनिंग इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग. इंटरनेट ऑफ थिंग एक सिंपल डेफिनेशन बताई जाए IoT की तो हर कोई ऐसी चीज जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और उसके थ्रू हम कोई भी टाइप का वर्क कर सके या फिर करवा सके तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग के Sorry साथ जोड़ to सकते हैं. interrupt you, sir. Can we make हेलो. it full screen? Can we make it full screen? फुल स्क्रीन अच्छे. ओके 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 श्योर. વેઇટ અ મિનિટ. Yeah, sure, sure, sir. હવે હવે થઈ ગયું ફૂલ સ્ક્રીન? Visible. You may continue, sir. यस यस. तो बेसिकली क्या है कि IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, ठीक है. तो इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है कि हर कोई ऐसी चीज जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके और उसके साथ हम कोई भी काम करवा सके और उसके थ्रू हम कोई काम ले सके तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग बोलेंगे. बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ? कोई ऐसी चीज जहाँ से इंटरनेट ऑफ थिंग का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है. जैसे कि हम ग्रेविटी का बात करते हैं तो न्यूटन और एप्पल से बात करते हैं. वैसे ही IoT का स्टार्टअप हुआ था RFID से. RFID मीनिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी मॉड्यूल. ठीक है. तो RFID कार्ड अभी आप देख रहे हो कि फास्ट कार्ड सिस्टम हो गया या फिर आपका आई कार्ड हो गया जो जिसको आप टैप करके घर का डोर या फिर लॉक ओपन क्लोज करते हो वो RFID कार्ड है. ठीक है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्ट हमने यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्ट हुआ था. बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है. ठीक है. तो बेसिक इंट्रोडक्शन. IoT refers things that we use every day that also connect the internet allowing to either control or receive data about that things from your smartphone or your computer. ठीक है. तो क्या होता है कि IoT के साथ कौन कौन से कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्मार्ट अप्लायंसेस हो गए जैसे कि AC TV फ्रिज वॉशिंग मशीन होम के सारे जो सिक्योरिटी ऑप्शंस है वो भी. ठीक है. डोर लॉक सिस्टम आपके लॉकर सिस्टम्स आइदर स्मार्ट होम हब्स यानी कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इमेज प्रोसेसिंग उसके साथ आगे स्मार्ट असिस्टेंट यानी कि आप हेलो सिरी बोलते हेलो गूगल बोलते एलेक्सा वो सारे IoT कंपोनेंट्स के साथ कहलाएंगे. ठीक है. और इंटरनेट ऑफ थिंग कहाँ कहाँ पे है बेसिकली हम स्टार्ट करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग और रोबोटिक्स वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है बेसिकली. तो रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स क्या है हम स्टार्ट दोनों का साइमल्टेनियसली करेंगे. रोबोटिक्स क्या है? तो रोबोटिक्स यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम प्रेफर करें तो हम जो पहले काम करते थे वही काम आसान तरीके से किसी भी मशीन द्वारा करवाई जाए तो उसको हम रोबोटिक्स कहेंगे. ठीक है. तो वर्ल्ड के कोई भी रोबोटिक्स ले लो कोई भी मशीनरीज ले लो वो बेसिकली 3 टाइप्स में काम करते हैं यानी कि उसके अंदर 3 मेजर टाइप्स रहता है. फर्स्ट वन इज सेंसर्स और IoT भी सेंसर्स ऊपर डिपेंडेंट है. तो फर्स्ट इज सेंसर्स. तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सेंसर्स बहुत सारे होते हैं. तो सेंसर क्या है बेसिकली? तो सेंसर यानी कि हर कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है. किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल सके तो उसको हम पर्टिकुलर उसका सेंसर कहेंगे. ठीक है. तो जैसे कि हम भी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे यहाँ हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं
जैसे कि आईज हो गई देखने के लिए, टंग हो गई टेस्ट के लिए, नोज हो गया स्मेल के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई टच स्क्रीन के लिए, आइदर ईयर हो गया हमारे साउंड सेंसर के लिए। वैसे ही जिस जिस टाइप का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग थ्रू हमारे पास सेंसर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सेंसर किसको कहेंगे? सेंसर हमें क्या देता है? सेंसर हमें इनपुट्स देते हैं, यानी कि कोई भी सेंसर क्या देगा? इनपुट देगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हो अलग अलग टाइप के सेंसर्स अवेलेबल है, जैसे कि एक्सेलरेशन सेंसर हो गया, वाइब्रेशन सेंसर हो गया, पोजीशन प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, केमिकल यानी कि गैस, हमारा नोज है वो केमिकल गैस सेंसर है, एकोस्टिक साउंड यानी कि हमारा ईयर जो है वो एम्बिशन लाइट एंड मशीन विजन ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, वाटर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर सेंसर हो गया, मोशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर, फोर्स लोड प्रेशर सेंसर, इलेक्ट्रिक सेंसर। ठीक है, RFID एंड NFC, यस, जो IoT जहां से स्टार्ट हुआ वो ये 2 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, RFID एंड NFC। ठीक है, एंड देन अल्ट्रासाउंड सेंसर यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो बेसिकली सेंसर्स 2 टाइप का हमें इनपुट देता है। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज अ डिजिटल। ठीक है, इन एनालॉग सेंसर जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, लाइट इंटेंसिटी सेंसर हो गया, लोड एंड प्रेशर सेंसर हो गया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर से जो एनालॉग सेंसर यानी कि हमें एनालॉग वैल्यू देंगे। तो एनालॉग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? एनालॉग वैल्यू होगी 0 से लेके 1023 तक की। और डिजिटल सेंसर, तो डिजिटल सेंसर की बात करें तो जैसे कि पोजीशन सेंसर हो गया, एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो गया, टच सेंसर हो गया, तो वो सारे डिजिटल सेंसर हो गए। तो डिजिटल सेंसर हमें इनपुट देता है डिजिटल यानी कि 0 और 1। अगर वो डिटेक्ट करता है तो 0 होगा, अगर वो डिटेक्ट नहीं करता है तो 1 हो सकता है। यानी कि हमें 2 टाइप के इनपुट मिलेंगे, 0 और 1। वो होगा डिजिटल के अंदर, और एनालॉग के अंदर होगा 10 से 23 तक, यानी कि कोई भी हमें वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी की बात की जाए तो इन अ मॉर्निंग लाइट की इंटेंसिटी आएगा नियरली इक्वल टू 0 से लेके 100 तक। ठीक है, आफ्टर अ 1 आवर वो बढ़ता जाएगा, यानी 100 से 200 हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर 200 से 300 हो जाएगा। इन नून उसका प्योर वैल्यू हो जाएगा 1023 तक का। सेम आफ्टरनून के बाद, आफ्टरनून उसका वैल्यू कम होता जाएगा, जैसे कि जैसे इवनिंग होती जाएगी वैसे वैसे उसका वैल्यू 1023 से लेके कम होता होता जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1023 से लेके 100 तक। ठीक है, तो कोई भी रोबोटिक्स IoT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेंसर। सेंसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर है, यानी कि कोई भी सेंसर हमें 2 टाइप के इनपुट देगा। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज डिजिटल। एनालॉग के अंदर 0 और 1 होगा, डिजिटल के अंदर 0 से लेके 1023 तक। आप कोई भी रोबोट बनाना चाहो तो सबसे पहले आप कौन सा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग आपके पास सेंसर्स अवेलेबल है, आप पर्टिकुलर जो प्रॉपर वैल्यू दे सके आप एनालॉग और डिजिटल प्रीफर करके वो सेंसर का सिलेक्शन कर सकते हो। सेकंड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर क्या है? तो एक्चुएटर जिसके थ्रू हम किसी भी चीज का मूवमेंट करवा सके या फिर किसी भी चीज का हम उसको आउटपुट दे सके तो उसको बोलेंगे हम एक्चुएटर्स। ठीक है, तो एक्चुएटर बेसिकली क्या है कि जिसके थ्रू हम मूवमेंट करवा सके और आउटपुट दे सके। हमारे कंप्यूटर के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो वो सारे क्या आउटपुट डिवाइसेस है, यानी कि जिसके थ्रू हम उसका आउटपुट दे सके। तो मॉनिटर हो गया वो आउटपुट है। वैसे ही एक्चुएटर्स यानी कि जिसके थ्रू हम मूवमेंट करवा सके और जिसके थ्रू हम आउटपुट दिखा सके उसको हम बोलेंगे एक्चुएटर्स। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल, सेकंड वन इज हाइड्रोलिक, थर्ड वन इज न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिकल यानी कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है जैसे कि मोटर्स, मोटर्स के अंदर DC सर्वो, AC मोटर, स्टेपर मोटर और सोलेनोइड वाल्व। ठीक है, तो वो सारे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर हो गए जो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू
मूवमेंट या फिर हम इंफॉर्मेशन आउटपुट करके दे सके, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुएटर्स बोलेंगे। बेसिकली डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के साथ हम डीसी सर्वो, स्टेपर मोटर और एसी मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हम न्यूमेटिक एक्चुएटर ले लेते हैं। न्यूमेटिक यूज कंप्रेस्ड एयर एज अ ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जो गैसेस के थ्रू यानी कि एयर कंप्रेशन के थ्रू हो सकता है, उसको हम न्यूमेटिक एक्चुएटर बोलेंगे। तो रोबोटिक आर्म बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स राइट नाउ, जैसे कि स्टेपर मोटर हो गई, सर्वो मोटर हो गई और इलेक्ट्रिक डीसी सर्वो मोटर हो गई। तो वो सब हम रोबोटिक्स आर्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होते हैं। सेकंड वन इज अ न्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एयर पंप कंप्रेसर के अंदर होता है, ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन के अंदर होता है, और जहाँ पे एयर कंप्रेशन के थ्रू हम वर्क करवा सके वहाँ के अंदर न्यूमेटिक एक्चुएटर। और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, न्यूमेटिक एक्चुएटर में कभी कभी एयर लीकेजेस की वजह से हम इतना प्रॉपर नहीं करवा सकते, लेकिन हाइड्रोलिक एक्चुएटर जैसे हमने देखा है, सब लोगों ने तो जेसीबी देखा ही होगा, यानी कि जेसीबी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी कंपोनेंट को उठा के रखने के लिए या फिर वर्कआउट करने के लिए। तो जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, उसके साथ जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ करके कंट्रोल कर सके, उसको हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर बोलेंगे, जिसमें सारे हाइड्रोलिक्स होते हैं। ठीक है, तो रोबोटिक्स के अंदर सेकंड वन है एक्चुएटर्स। तो हम रिमोट कंट्रोल कार की बात की जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऑब्स्टेकल अवॉइडर बना सकते हैं, उसके लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर रहेंगे, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाने के लिए, और जिसके थ्रू हम मूवमेंट करवा सके, ठीक है, वो एक्चुएटर्स है। उसके अंदर मोटर और व्हील और गियर। बेसिकली एक्चुएटर्स में होता क्या, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो एक्चुएटर्स में होता है मोटर, गियर और व्हील। ये तीनों चीज मिलके हम एक्चुएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। हाइड्रोलिक में सेम है, मोटर गियर के साथ क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोलिक फ्लूइड हो जाएगा। सेम न्यूमेटिक के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रेस एयर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के अंदर मोटर्स तो रहेंगी। और लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, वो कंट्रोलर। अभी मार्केट के अंदर हाईएस्ट यूज होने वाले कंट्रोलर है हमारे ये आर्डुनो। आर्डुनो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आर्डुनो अवेलेबल है हमारे पास। मिनी, प्रो मिनी, नैनो, माइक्रो, जीरो, ओनो, यूनो वाईफाई, जीरो, मेगा, 101, लिली पैड यूएसबी, गेमा, इतने सारे आर्डुनो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली कंट्रोलर का कोई भी रोबोटिक्स के अंदर फंक्शनैलिटी क्या रहता है, कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल, हाँ, सबसे पहले डिफरेंट बिटवीन प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, वो सबसे पहले सीखने वाली चीज है। प्रोसेसर क्या है और कंट्रोलर क्या है? प्रोसेसर मल्टीटास्किंग है, यानी कि एक साथ आप दो दो काम कर सकते हो, उसके अंदर माइनर चेंज के साथ एक के साथ दूसरा काम कर सकते हो। लेकिन कंट्रोलर जो पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको हम बोलेंगे कंट्रोलर। यानी कि एक बार आप उसको कमांड दे देते हो तो पर्टिकुलरली वो कमांड के थ्रू ही वो वर्क करता जाएगा। बेसिकली कंट्रोलर के अंदर भी प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर के साथ मेमोरी डिवाइस अटैच हो जाती है जो पर्टिकुलर टास्क डिजाइन करने के लिए होती है, उसको हम कंट्रोलर बोलते हैं ना। ओके, विद दिस कि कंट्रोलर क्या है और प्रोसेसर क्या है। तो कंट्रोलर ये है कि जो पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन किस तरीके का टास्क, वो कैसे टास्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्डुनो आपको दिखाई दिए जाते हैं, वो आर्डुनो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिन्स अवेलेबल है, जैसे कि पावर पिन हो गई, एनालॉग पिन हो गई, डिजिटल पिन हो गई, TX RS के लिए पिन हो गई। ठीक है, तो वैसे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पिन्स अवेलेबल है। तो पावर पिन जो 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 के लिए पावर पिन दी जाती है। सेकंड पिन इज एनालॉग पिन, PWM पिन बोलते हैं। एनालॉग पिन, सॉरी, डिजिटल पिन, डिजिटल PWM पिन, यानी कि जिसके थ्रू हम डिजिटल सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंट्रोल कनेक्ट करके कंट्रोल कर सके। थर्ड वन है आपकी एनालॉग पिन, यानी कि उस पिन के थ्रू आप एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट करके एनालॉग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और TX RX पिन, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, ZigBee हो गया, और डेटा RF TX RX मॉड्यूल हो गया,
तो वो सारे कंपोनेंट्स को आप TX-RX पिन के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि उसके थ्रू आप इनपुट भी ले सकते हो और आउटपुट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका कंट्रोलर का बेसिक फंक्शन क्या होगा? तो कंट्रोलर बेसिकली सेंसर जो हमें इनपुट देते हैं, मैंने पहले सिखाया, जो सेंसर हमें इनपुट देंगे एनालॉग और डिजिटल, उसके थ्रू कंट्रोलर इनपुट को कलेक्ट करेगा। और दूसरा होगा आउटपुट, यानी कि जो मैंने एक्चुएटर्स बताया, एक्चुएटर्स के अंदर आउटपुट डिवाइस ऐड होती जाती है, जैसे कि LED, बजर, सायरन, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सेंसर्स। ठीक है, उसके साथ भी हम दूसरा कुछ कंट्रोलर डिवाइस यूज कर सकते हैं, रिले हो गया। तो वो आउटपुट डिवाइस को कमांड देगा, यानी कि सेंसर्स के पास इनपुट कलेक्ट करेगा और आउटपुट को जो कमांड देगा कि इस सेंसर के साथ आप ये इनपुट होता है तो ये आप आउटपुट करके दोगे। जैसे कि हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी, मैंने रोबोटिक्स की बात बताई, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स अवेलेबल है और हमारे एक्चुएटर्स कौन से, हैंड्स और लेग्स, ठीक है, हमारी स्किन्स। तो हमारे आउटपुट इस डिवाइस है, जैसे कि आइज हो गया, ईयर हो गया, वो भी हमारे आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि क्या होगा, हमारे हैंड के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस मैंने पकड़ रखे हैं, यानी कि एक हाथ के अंदर मेरा बहुत गर्म पानी वाला ग्लास है और दूसरे हाथ में एकदम ठंडा वाला ग्लास है। तो मेरे हैंड के सेंसर क्या डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे, यानी कि जो गर्म है इसको मैं पकड़ नहीं सकता, तो मेरे एक्चुएटर क्या करेंगे, मेरे माइंड को वो सिग्नल देंगे कि सेंसर को सेंस करके वो सिग्नल देंगे कि इसका टेम्परेचर हाई है तो आप उसको साइड पे रख दो। तो आप क्या करोगे, कहीं भी आप छुओगे तो गर्म लगता है तो आप उसको छोड़ दोगे, और ठंडा लगता है तो उसको आप पकड़ के रखोगे। तो हमारा माइंड का यही काम है कि सेंसर के पास वो इन्फॉर्मेशन लेता है और एक्चुएटर के पास वो काम करवाता है। वैसे ही यहाँ पे कंट्रोलर का वही होगा, जो हम उसको कमांड देंगे कि कोई पर्टिकुलर सेंसर के पास हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके थ्रू हम पर्टिकुलर टास्क करवाएंगे। वैसे ही रोबोटिक्स का काम रहता है। रोबोटिक्स क्या काम करेगा कि पर्टिकुलर आइटम को डिटेक्ट करेगा, उसके पास जो इनपुट इंफॉर्मेशन लेगा और उसके रिगार्डिंग वो टास्क करवाएगा। आपने रोबोटिक काम देखा होगा कि पिक एंड प्लेस, एक चीज को डिटेक्ट करेगा, उसको पिक करेगा, दूसरी जगह वहां पे रखना है उसको डिटेक्ट करेगा और वहां पे प्लेस कर देगा। तो वो गया रोबोटिक्स आपका। जैसे कि लाइन फॉलोइंग हो गया, तो लाइन फॉलोइंग क्या करेगा, वो लाइन को डिटेक्ट करेगा सेंसर और उसके थ्रू वो कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देगा और वो कंट्रोलर उसे उसके रिगार्डिंग आपने जो कमांड दिया है उसके रिगार्डिंग वो मोटर ड्रिवन करके उसके पाथ फॉलो करता जाएगा। ठीक है, तो वो ये हो गए आपका रोबोटिक्स के पार्ट्स। नाउ एनी डाउट्स हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास रोबोटिक्स और आईओटी, ये सारे रोबोटिक्स थे। रोबोटिक्स के अंदर सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर और रोबोटिक्स के वर्किंग हो गए। आप वर्ल्ड के कोई भी, यानी कि वॉशिंग मशीन ले लो या फिर कोई भी मशीन ले लो, इसके अंदर ये तीनों चीज पर्टिकुलर इस तरीके से काम करें। हाँ, इसके जो वर्किंग मॉड्यूल है, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका मेन हब, मेन पोर्शन इसी तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अब आईओटी की बात की जाए तो कोई भी रोबोट, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके, यानी कि अभी तो आपका वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि उसको भी आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपका टीवी हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट अप्लायंसेस, इवन कार, बाइक, व्हीकल्स हो गए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, तो वो उसको साथ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन हम ले सके और उसको हम काम करवा सके, यानी कि उसका सेंसर भी बना सके और उसका हम दोनों का इनपुट आउटपुट दोनों कम्युनिकेशन कर सके, उसको बोलेंगे हम आईओटी। तो अभी आईओटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है तो आईओटी किस तरीके से काम करता है आप देख सकते हो। Internet of Things, heavy machineries, transportation, smart city, automation, factories, healthcare, automation, home monitoring, appliances, TV, phone, and variables. ठीक है, तो IoT अभी फैला हुआ है। तो IoT क्या है, जो कोई पर्टिकुलर सेंसर्स के साथ इंफॉर्मेशन लेगा और उसको इंटरनेट के सर्वर के ऊपर डालेगा और वहां से वो सर्वर थ्रू हमें इनपुट करके देगा, उसको हम बोलेंगे आईओटी। ठीक है, तो आईओटी इस तरीके से काम करेगा जैसे कि मैंने बताया। हाँ, उसके पहले हम नोड एमसीयू देख लेते हैं। यस, आपने नोड एमसीयू देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिखा देता हूँ। यस,
और एक चीज़ रह गई, हाँ, मेजर पार्ट इन मार्केट के लिए, आईओटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्रोलर्स, कंट्रोलिंग डिवाइस। तो सबसे पहले रास्पबेरी पाई, जो एक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके थ्रू एक आपका मिनी कंप्यूटर बोल सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। तो अभी रास्पबेरी पाई इज अ वेरी पॉपुलर डिजाइन इन यूज टू बिल्डिंग आईओटी प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली लॉन्च रास्पबेरी पाई 3-4 मॉडल, यस, रास्पबेरी पाई 3 B प्लस मॉड्यूल एज वेल एज द रास्पबेरी पाई 4 मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके अंदर अलग अलग जीपीआईओ पिन होगी, जीपीआईओ यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स होंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी ओएस का कोडिंग करके आप उसका आईओटी डिवाइस बना सकते हो। सेकंड वन इज आर्डुनो बोर्ड। आर्डुनो मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स हमारे पास अवेलेबल है, और टीएक्स आरएक्स पिन के थ्रू उसको हम उसका डेटा इनपुट आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ नोड एमसीयू, यानी कि ESP8266 लो कॉस्ट डिवाइस है। लो ESP8266 is a low cost Wi-Fi microchip with a 32-bit microcontroller capability, standard digital peripheral interface. There are different type of ESP boards are available in a different needs, जैसे कि ESP8266 हो गया, ESP32, ESP64 हो गया, वो सारे इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल है। ESP का जो मॉड्यूल है उसको आप राउटर के थ्रू भी इस्तेमाल करके सेंड कर सकते हो, या फिर किसी भी राउटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंट। नोड एमसीयू मार्केट में इजी टू अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसको परचेस कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन साइट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो गई, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आईओटी के बेनिफिट्स क्या है, हमारे पास आईओटी के बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आईओटी। तो आईओटी के बेनिफिट की बात की जाए तो सबसे पहले हम बैक हो जाते हैं, हमारे स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो पहले एक जगह से दूसरी जगह हमें किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन सेंड करना था तो हम लेटर राइटिंग करते थे। उसके बाद आ गया स्मार्टफोन एसएमएस, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो वो क्या हो गया कि वो मैसेज डिलीवर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते थे। तो अभी डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया, यानी कि एक डेटा को लेके दूसरे डेटा तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट, और उसके थ्रू हम उसका कंट्रोल कर सके, इसके लिए बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिकली क्या है, आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा। तो उसके बेनिफिट क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिना इंटरनेट के तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हम शाम को खत्म होते होते होते, हाँ इतना डेटा मेरा चला गया यार, ये डेटा वो डेटा, ठीक है। तो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आप डेटा किसी चीज बात इनपुट के थ्रू लेते हो, उसको इंटरनेट के मीडियम थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करते हो और उसके थ्रू कोई भी काम करवा रहे हो, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो उसका एफर्ट क्या हो गया, यानी कि आप जो पहले काम करते थे वही काम आसान तरीके से किसी भी मीडियम या फिर मशीन थ्रू करवाई गई, इसको बोलेंगे हम रोबोटिक्स, और उसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम आईओटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सीखोगे, और डिफरेंट डिफरेंट, अभी आप तो बेसिक सीख रहे हो, अगर आप व्हाट काइंड ऑफ सेंसर वी कैन यूज, हाउ दे वर्क, हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू मैनेज इट, एंड हाउ वी आर डू such kind of work using that sensor as well as the actuator, and how to control with the controller, different type of controller, जैसे कि Arduino, Raspberry Pi और Node MCU, ठीक है। तो वो IoT हो गया। तो IoT इससे हमें बेनिफिट क्या है, तो ह्यूमन एफर्ट का जो मिनिमाइज हो गया, यानी क्या करते थे, हम जो स्विच है उसको बंद करने के लिए कहीं से भी उठ के हमें जाना पड़ता था, अब क्या हो गया IoT के साथ हो गया, यानी कि हम उसको रिले के साथ कनेक्ट करके हमारे स्मार्टफोन के थ्रू उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने के। सेव द टाइम, यस, अगर ह्यूमन एफर्ट कम हो गया तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि उसका जो एक्यूरेसी है वो इंटरनेट के डिपेंडेंट रहेगा, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो कहीं से भी। इम्प्रूव सिक्योरिटी, यस, व्हाई नॉट, श्योर, इम्प्रूव सिक्योरिटी। आईओटी के अंदर हम फेस रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, वो सब सीख सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या हो गया कि सिक्योरिटी उसका लेवल बढ़ गया। तो पहले सिक्योरिटी के अंदर क्या था
कि अगर हमारे घर पे चोरी है तो बगल में ही पता चल सके, लेकिन अभी हमारे पास RFID मॉड्यूल हो गया, CCTV कैमरा हो गया, सेंसर्स के साथ हम सिक्योरिटी डिवाइस बना सकते हैं, और उसका कॉलिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेट के थ्रू हम SMS अलर्ट बना सकते हैं। तो वो सारे इम्प्रूव सिक्योरिटीज हो गए। थर्ड वन, अब आता है डिसएडवांटेजेस। जो इम्प्रूव सिक्योरिटी की हुई है वही सिक्योरिटी हमें डिसएडवांटेज प्रोवाइड करती है। अभी हैकिंग की बात की जाए तो हमारे डेटा का चोरी हो सकता है, राइट, यानी कि जो कोई इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो भी हमारे इंटरनेट को यूज करके हमें भी कंट्रोल करवा सकता है, उसका पैरामीटर ब्रोक करके, ठीक है। सेकंड वन इज प्राइवेसी। प्राइवेसी की बात की, हाँ यस, हम हमारे स्मार्टफोन की प्राइवेसी की बात करें तो उसको भी ब्रेक की जा सकती। कॉम्प्लेक्सिटी, यस, जो पहले हम अभी स्विच की बात की, हम उठ के स्विच ऑन ऑफ कर सकते थे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ गई कि उस स्विच को किसके साथ कनेक्ट करना है, किस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, रिले किस डायरेक्शन में वर्क करेगी, हाँ उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कनेक्शन, कोडिंग, कंट्रोलिंग, सेंसर्स, वो सारी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो यानी कि IoT का यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, यानी कि जो हमें जितनी सुविधाएं दे रहा है उतनी सुविधा हमसे ले भी रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ही बोलता था कि जो जितनी आसान है वो उतनी डिफिकल्ट होती है, तो वही एफर्ट्स यहाँ पे भी है कि IoT के अंदर ये इक्विपमेंट्स होते हैं। और ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगर IoT के बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये नोड MCU डिवाइसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोड MCU के साथ हम स्मार्टफोन अप्लायंसेस बना सकते हैं, यानी कि होम ऑटोमेशन हो गया, कहीं से भी आपका किसी का भी डेटा सर्वर के ऊपर डाल के आपको कमांड और कंट्रोलिंग करवाना है वो भी कर सकते हो। उसको रास्पबेरी पाई के साथ डिफरेंट सेंसर्स को कंट्रोल करके बना सकते हो। ये आपका ये शेड्यूल हो गया। हाँ, और दो चीज रह गई। हाँ, ये था 8 करोड़ 8 RGB LED मैट्रिक्स, और डेटा ट्रांसफर के लिए जैसे मैंने बताया HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के साथ आपको डेटा का ट्रांसमिट और रिसीव करवा सकता है। यस, यस। अभी IoT कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है और किस डायरेक्शन में इस्तेमाल होती है उसकी बात की जाए तो फर्स्ट वन इज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है IoT डिवाइसेस? जैसे अभी आपने देखा फार्मेसी एप्लीकेशन हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल, आप क्या कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट पे जाके उसका मेडिकल का रिपोर्ट है, मेडिसिन है, वो रिपोर्ट डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ पे भी मेडिसिन मंगवानी हो इंटरनेट के थ्रू आपका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपने देखा होगा रोबोटिक्स, डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह कहीं कहीं से भी वो कमांड करके ऑपरेशन कर सकता है, उसका डेटा देख सकता है, उसका हेल्थ केयर इशू करवा सकता है, ठीक है। तो अभी कोविड सिचुएशन के थ्रू IoT डिवाइसेस बहुत इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि कोविड जोन हो गया तो वहाँ पे कोई पीपल जा नहीं सकते थे, तो हमने IoT डिवाइस का एक मॉडल बनाया था, यानी कि हमारे स्मार्टफोन के थ्रू हम एक ट्रॉली बनाई थी जिसके अंदर हम मेडिसिन रख के, फूड रख के, फ्रूट्स रख के हम पेशेंट के वहाँ सेंड कर सकते हैं, और उसको हमारे कोई भी एक कंट्रोल या फिर कमांड सेंटर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप घर पे बैठे बैठे हॉस्पिटल के अंदर भी ये आप ट्रॉली को ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट मीडियम, ठीक है। स्मार्ट सिटी, यस, स्मार्ट सिटी यानी कि सिटी का कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो। जैसे कि रेसिडेंट हो गया, स्कूल हो गया, मेडिकल हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, मूवीज थिएटर हो गया, आपको किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें मिल सकता है। स्मार्ट सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं भी वाईफाई अवेलेबल है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे, और क्लीनिंग के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ IoT मॉडल्स वहाँ पे रेडी हो चुके हैं। जैसे कि वेदर का इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे स्मार्ट बसेस हो गई जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। थर्ड वन इज अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप अपना डेटा कहीं पे भी बिजनेस मॉड्यूल के थ्रू सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अगर आपको बिजनेस करना है तो यहाँ से दिल्ली तक आप अपना डेटा आपको लेटर के थ्रू सेंड करना पड़ता था या फिर SMS के थ्रू
सेटअप करना पड़ता है। अभी क्या है कि इंटरनेट के मीडियम थ्रू आप कहीं पे भी कॉलिंग करके, वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, एडवांस बना सकते हैं। अब आते हैं ऑटोमोटिव के थ्रू। ऑटोमोटिव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्मार्ट हाइब्रिड कार्स अवेलेबल है, IoT बेस अवेलेबल है, जैसे कि MG एक्टर हो गया, इंटरनेट इनसाइड उसमें लिखा रहता है। तो इंटरनेट इनसाइड यानी क्या है? यानी कि उसके अंदर जीपीएस लोकेशन भी रहता है, आप स्मार्टफोन के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हो। आपने ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन कार देखी, वो सारे आईओटीज है, यानी कि उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को देता है और उसका हम कंट्रोलिंग सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया आईओटी का एप्लीकेशन। ओके, नाउ एनी फर्दर क्वेश्चन आप मुझे बोल सकते हो। अगर कोई बेसिक आपको पता नहीं चल रहा है तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आईओटी क्या है, रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स के अंदर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर के थ्रू हमें बता सकते हो, ठीक है सर? Yeah, sir. And I'm just हेलो displaying one question. Yeah, sir. हेलो, I'm just. This, are you able to hear my voice? यस यस यस। Just hold on. Hello. हाँ यस सर। Yes, I'm just displaying one बेसिकली क्या question. था सर, कि जो अभी क्या है कि बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि Hmm. आईओटी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। Hmm. हम आईओटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये आईओटी का मेन पॉइंट है, यानी कि ये बेस है। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप Hmm. आईओटी में क्या करना चाहते हो वो आपको लाइन मिल सकती है, राइट? जैसे Right. कि आईओटी Right. हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिकली क्या है कि सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोलर जो मेन पार्ट्स है, तो हम Hmm. उसके थ्रू उसका सीख सकते हैं। बच्चों को आईओटी सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले Sure. सेंसर सीखो, उसका इनपुट लेना सिखा सकते हैं, और वही इनपुट हम इंटरनेट पे डाल के उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको हम कमांड और कंट्रोल करके एक्चुएटर के साथ वो हम प्रोसेस फर्दर कर सकते हैं। तो वो हो गया Oh, आईओटी। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ जहाँ जहाँ पे वो आईओटी इस्तेमाल sure. होता है। अभी आईओटी सर वन वन क्वेश्चन मैंने डेटा डिस्प्ले किया इस्तेमाल हुआ होता है यहाँ पे। है। यस सर। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया है मैंने। व्हाट सर? नीचे नीचे स्क्रीन के नीचे एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। वो क्वेश्चन ऑडियंस के साइड से आया हुआ है। ओके, You can see on screen that what is MA rising. एम ए राइजिंग? Yeah, I think participant you can please write in detail because we are not able to understand what you are trying to ask. Yes, 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 yes. So राइट नाउ ये जो सेशन था आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए था, जो hmm, 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है इसके लिए। अगर इंजीनियरिंग के लिए है तो हम वो डिटेल में हम बता सकते हैं। hmm, hmm. Uh, just sir, we'll wait for one more minute. यस यस। Okay, so thank you very much, Vishal sir, थैंक यू सर। for your fruitful input. And in future also, we will definitely try to be in connect with you श्योर श्योर regarding श्योर, new डेफिनेटली sessions. सर। So thank you very much once again. So dear students, now next we have we are moving to the final session of today's talk, day one. So for the final session, we have with us Dr. K.B. Rathore.
Dr. K.B. Rathod is a head of Mechanical Engineering Department, and he has been working as a head of department since 2011. He has having more than 24 years of teaching and 2 years of industry experience. He did his BE, ME and PhD from SVNIT Surat. He has published more than 19 papers in national and international conferences. He has also published more 10 papers in reputed journals. He is a recognized PhD guide in GTU, and two students are doing PhD under his esteemed guidance. Department of Mechanical Engineering got accreditation under the leadership of Dr. K.B. Rathod. Now I request Dr. K.B. Rathod sir to please provide some full information about BE Mechanical Engineering. Please, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. Start. Okay, good afternoon to everybody, and thank you very much, Professor Vivek Joshi, for giving my introduction. I'm here to give some glimpse of the Mechanical Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology. Uh, in the beginning of this boot camp, Latif sir, the principal of RNGPIT, has also told that this department is already accredited by National Board of Accreditation. So, Mechanical Engineering Department and Chemical Engineering Departments are accredited by the National Board of Accreditation, New Delhi. So, this Mechanical Engineering Department was started in the year 2010 with the inception of this college. Right now the undergraduate program in mechanical engineering, and intact means the strength of the class is the 60 students. This program is affiliated with the Gujarat Technological University Ahmedabad, and it is approved by the AICTE New Delhi, All India Council of Technical Education. This is the very important that it is approved by the AICTE. So recently, the GTU has approved the specialization course in 3D printing from the academic year 21-22. Uh, I have also heard from the presentation of Professor Vivek Joshi. He has told about the Industry 4.0 and upcoming Industry 5.0, in which he has highlighted how the engineering or the world will work in the coming years, means 2030. So we have to look about our future, how our future will be, means how the engineer will work in the future. So that 3D printing is one of the instrument, one of the machine, or you can say the technology that will work in next coming days. So therefore, this department has taken the initiative to run the 3D printing from this academic year 21-22. But we have to take the permissions from the Gujarat Technological University, and we have received the uh, permission that we can run that 3D printing courses not only in mechanical engineering, but you can see that computer has also got the permission to run the artificial intelligence and machine learning, whereas the chemical engineering has
uh, received the permission to run the two specialized courses, that the Vast Technology and Industrial Process Safety. So 3D printing is one of the specialized course which is approved by the uh, Gujarat Technological University and from the academic year 2021. So benefit of running the specialization course in the college, it does not mean that the only mechanical engineers will select the 3D printing. If mechanical engineer wishes to select the artificial intelligence and machine learning, they can opt that course. So the institute has got the four different specialization courses, two in chemical engineering, one in mechanical engineering, and one in computer engineering. So the students of any stream of the RNGPIT can select any of the courses. It does not mean that the mechanical engineers only able to select the 3D printing. Okay, so if you are interested in coding and learning the machine learning, you mechanical engineer can select the artificial intelligence and the machine learning. If the mechanical engineer students think that no, I want to learn about the industrial process safety, then they can opt that particular course. Means the students, those who will wishes to opt that any of the courses, then they will get a specialized degree from the GTU, not from the RNGPIT. Means in the degree it will be written that the B honors mechanical engineering with specialization in 3D printing. If you opt the artificial intelligence and machine learning, you will get a degree of artificial intelligence and machine learning. So right now from the mechanical, from the first batch, the 20 students has enrolled for the 3D printing course. So that is the something new and which makes a difference than the any of the courses which is run by the any of the engineering college in the Gujarat. So you can see the glimpse of our complete college in the photograph. The department has signed right now the 19 MOUs. So memorandum of understanding means some of the understanding which will be put on a letter by the institute and the industry, so that the facilities of the industry as well as the facility of the institutes can be shared vice versa. So that is the importance of the MOUs, and did we did the total 19 MOUs. So out of which one of the important MOU is the Textile Manufacturing Machinery Association Mumbai jointly received a grant of 27 crore to build a common engineering facility center within our premises. You can see that on the right side below, the common engineering facility center. It is now on verge of completion, and within 1 or 2 after 1 or 2 years it will be completed, and our students of mechanical engineering will get first priority to work in that particular CEFC. So as far as the achievement is concerned, I can say that there are three faculty members, Professor B.B. Patel, H.B. Naik, and G.P. Chapaneri, have completed the non-restricting testing level 2, so which includes the DPT, MPT, UT, RT, and they are certified trainers as per the American Society of Non-Destructive Testing Association 1A from the December 2016. What is this that I will elaborate in next coming slides. But right now you understand that there are some of the three faculties are having something specialized than others that we will discuss afterward. Then our next three faculties, Professor N.B. Rathod, D.M. Patel, and N.M. Patel, have also completed the SolidWorks Associate certification from the Dassault System, France, in September 2019. And our department is running the SolidWorks Associate uh, certification course within our premises, and the students who will undergo this particular training will get a certificate from the Dassault System France. So you know that the Rafale, you might have heard about the Rafale, and that in our defense the Rafale aircraft has been purchased from the Dassault System France. Okay, so then I would like to tell you that myself and my colleague Dr. V.K. Joshi and J.B. Chaudhary
have also completed their PhD degree from the SNIT Surat. So this is the some of the achievements I have put forward to you. So as far as the faculty strength, so whenever you select any of the branch from any of the colleges, that you have to see that some of the points, and one point is the faculty strength. So how many students, how many faculties have PhD holders, how many faculties are carried out their PhD work, and what are the teaching facilities are available. So that we'll see one by one. So starting with me, that Professor Vivek Joshi has already introduced me. So I would not like to say something about me. Then after the Dr. V.K. Joshi, who also did their masters from the Nirma and PhD from the SNIT Surat, Professor B.B. Patel, who did their MTech IPED from the SNIT Surat. You just look at the experiences of the faculty members. Then Professor H.B. Naik, who did their masters from the Nirma University and right now doing his PhD in GTU. Professor Neo C. Rathod has also completed their ME Machine Designs from the BVM College, and right now he is with us and doing the PhD work in a GTU. Mr. G.K. Chapaneri, who has also did their MTech from Nirma in SIN, and Dr. J.B. Chaudhary, who is the assistant professor in mechanical engineering, who did his PhD from the SNIT Surat. And he has a vast experience of industry. He has also worked more than 5 years in Hindustan Aeronautics Limited Company. Then Mr. V.P. Bhagatwala, who did his ME turbo machines from the SNIT Surat. Then Mr. C.K. Balar, he did his MTech in mechanical engineering from SNIT Surat. Mr. D.M. Patel, he did ME CAD-CAM and doing his PhD in GTU. Mr. N.M. Patel, who did this ME in machine design from Pitawala College of Engineering. Yatin Chauhan, again MTech IPD from SNIT Surat. Vikram Mistry, who is ME IC Engine Automobiles, SK Merai, MTech Automobiles Technology, SH Joshi, MTech Thermal System Design, AP Solanki, ME Thermal Engineering, and doing his PhD from GTU. Mr. N.M. Pandya recently joined at our department, and his MTech Manufacturing Engineering from the SNIT Surat. So you see the strength of, and these four are the supporting staff member, lab assistants, Mr. A.P. Patel, who is a diploma holder, Mr. Vijay Prajapati, ITA welder, Mr. S.K. Mistry, Diploma Mechanical Engineering, S.P. Patel, Diploma Mechanical Engineering. So we are having this four supporting staff members. So you can see that all the 17 staff members have their degree in from the reputed colleges and having more than 10 years experiences. So as far as laboratory is concerned, looking to the requirement of the GTU, Gujarat Technical University, the department has developed 17 laboratories and mechanical workshop. You can see from the photographs that CAD lab, design of machinery, refrigeration, air conditioning, fluid mechanics, heat transfer, etc., etc. So these are the 7. So some of the additional facility apart from the laboratory, if the students want to carry out their project work, some research work, or to learn something skill-based things, then department has also developed some of the additional facility. So these 10 facilities are shown over here. So in which you can see that the CAD laboratory, in which we are running the SolidWorks, and we gives the certificate from the Dassault systems if students undergo a training, and gives the examinations through online mode. Then you or she will get the certificate from the Dassault France. Then we would also develop the tinkering lab. You can see the non-destructive testing laboratory where the students are working on a different parts. We are having the separate department library apart from the college laboratory.
We are having the 3D printer, which is shown over here. Then the 5 gas analyzers. Okay, so these are the few things which I have shown as a additional facility. So we are having a separate workshop, but in that workshop a separate space is provided for the students to go for the assemblies of doing the project work. So some of the glimpses of the completed projects are shown over here, which you can see. Okay, now the skill based training. What is skill based training? So only you study in any of the colleges, either it is a NIT or any reputed college, and you only get a degree, then there is no chance to get a good job, though you are not having any skill. So if you are studying in any of the branch, any of the engineering branch, and you don't have a particular skill which industry requires, then you will not having any chance to serve or to build a good career. So therefore, some of the skill based training program has been conducted since long by the department. So you can see over here. So in mechanical engineering, you can see the Horco milling machine, which is situated at the Mira industry. Then the CNC machines, then the non-destructive testing machine, then wind energy. In power sector, it is required. Then the students undergo a SolidWorks training and gets a certificates from the SolidWorks. Those who undergo a NDT non-destructive testing level, the students will get a certificate from American Society for Non-Destructive Testing of level 2, and it is uh, available at our college. Now, I will show you that this is the DX200 Jyoti CNC machine. It is a production machine. So we can also purchase some of the trainer machine, but we have not purchased the trainer machine. So this is the machine you will see over here, the computerized numerical control machine, where student has to do only the programming and rest of the thing will be done automatically. So here you will see that this machine we have purchased it is called a production machine. So the industry the machine is used, the similar machines we have purchased in our workshop. So the students, those who undergo a training or learn this subject, they will not having any new experience when they will go to the industry. And the training program, apart from the curriculum teaching, we also undergo a training program, and in association with the SETI Foundation, they provide the certificate, the students, those who will undergo the training. And so far, we have trained 160 students successfully on the CNC machining. So I told you that the students, those who will of this particular SolidWorks training, and they completes the online examination, and if he successfully pass that examination, then the sole system will provide the certificate. You will see from this slide that Vignesh Mistry and Yadu Krishna Suresh Kumar, both are the final year students. They have done this course and received a certificate. So far we have more than 150 students from different graduate level have successfully completed CSWASD examination conducted by the Dassault System France in August 2022 to September 2022. One more training, summer internship training, which you can see over here. It is on the wind energy training, and we have the association with UGES PowerMax Limited, Vadodara. The director of UGES PowerMax Limited, Mr. Amit Patel, they and his team comes to train the students over here, and those students successfully undergoes this training. So from that, the Mr. Amit Patel, the owner of this company, will select the students for the uh, wind energy for his company. So the certificate is given by the UGES, not by the RNGPIT. You can see that, and the successful students that you can see from the pic. So far, more than 70 students have participated, and many of the students have been upwards by that particular company. So in summer internship training, what I told you, that four different kind of the skill based training we are running, and based on that we are providing
the certificate to the students. So here in summer internship training of mechanical engineering, where SCAM, NC, DNC, CNC, in association with the set foundations have been carried out. The different photographs are shown over here. Now, as far as result is concerned, so this department has secured first rank at state level 9 times till date. This college has been started in 2010, and right now it is 2022. So we have achieved the first rank in the GTU 9 times, and the department has secured top 10 rank within top 10 rank, means एक से 10 के बीच में, at state level 16 times till that. So you can see that we are having a very core strength of the faculty. We are having a very good laboratories. We are having this specialized training. We are having the collaboration with the industry. Therefore, this kind of the results that we can easily achieve. Now, apart from that teaching, we also provide. This is not only the mechanical engineering is provided, but the college undergo two different types of the program under the curriculum and extracurriculum activities, where every year this college organizes the Viswasruti on 15th September. It is the birthday of Dr. Viswasaraya, for the celebrations of the Engineers Day, to recognize the honor of the achievement of the great engineer Max Kundum Viswasaraya. So we also organize the Kausalya, the Sports Week, and the CASIS, the Cultural Weeks, and Culture and Prize Distribution in odd and even semester respectively. So you can see the some of the glints of the technical festival, which we have given based on the name of Visvesaraya. Every year we organize this particular technical festival at our college, where each and every streams of the students took participate in various technical and non-technical events and get the certificates and won the prize up to 2 lakhs. Since last 2 years, because of the pandemic, we have run this Visma Shruti on online mode, but hopefully from this year, again, we will go on offline mode. So these are some of the glimpses of the sports program of outdoor as well as indoor, where you can see that we are having a beautiful ground within our premises. So this is the cultural program, musical program. Uh, You can see the various events of dance, singing, drama, everything is going on recently. On just in last week, this CASIS 2022 has been completed. Now, industrial visit and the expert lecture, which is the very important part of the curriculum, and our department have been practicing since long this industrial visit as well as the expert lectures. So some of the glimpses of the photographs are shown over here. You can see that the Sardar Sarovar, Narmada Nigam Limited, Kevadia Colony. These are the photographs are shown. So based on the requirement of a particular semester, we organize the different industrial visit that you can see. Ukai Hydropower Plant Ukai, Kakrapar Atomic Power Station, Motiche, then Sri Ambika Automobile Sales and Service, Kamra Surat, then Alidra Textile Engineering Limited, Udyognagar, Udana, Surat. So it covers all the various streams of the mechanical engineering, energy sector, automobile sector, then manufacturing sector, then design sector. So looking to each and every requirement in a different semester, we organize the industrial visit. You can see over here the Great White Global Private Limited, Gundla, Valsad, where this training is related to the design and manufacturing. So this is particularly the Novatech fabricators Navsari. This particular training is related to the manufacturing field only. So Amtech Private Limited, Navsari, again it is the manufacturing and design. I told you that these are the two important pillars of the education. One is the industrial visit and another is the expert lectures. So here we will get the benefit of the SVNIT Surat, which is very nearby to us. Therefore, we call the different areas know that how
the teaching of the S1IT and hours are there. And so you can visualize the various expert lecture delivered by the different experts over here. So this is the honor of this digitization SolidWorks. So 5 days STTP on mechanical safety, which is conducted by the department. You can see the various photograph, workshop and seminar. And various activities, because this is required. It is required to encourage the students to attend the workshop, seminar, and to participate in inter-institute competition, undergo the industrial visit, participate in technical events and publish paper, participate in webinars and national convention. So therefore, the two different student chapters run by the department. One is known as the Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineering, which is known as the ISRE, and another is the Quality Circle Forum of India, which is known as the QCFI. Department also publish the various technical magazines and newsletter. And technical magazines will give you the idea and knowledge about what recent trends is going on in a particular stream. Here it is a mechanical engineering. Then all the departments and the college also publish the e-newsletter at the end of the semester, that you can see the various glimpse of the e-newsletter. And okay, the most important part is the interview and the software development program. So as we know that the students, those who are coming over here, they are not that much fluent in English, and do not have any experience that how to face the interviews. Therefore, that initiative is taken by the institute, that they calls the various experts to conduct the various kind of the programs and seminars on the soft skill and how to face the interviews. So you can see from the photographs that this thing is going on every year in the college. So these are the various recruitment procedures and exercises have been taken up by the institute, which is seen from the photograph, and it has been continuing so far. You can see that various school recruitment campus trial, which has been conducted by the training and placement of this department of RNGPIT college, not department. So some of the innovative projects completed by our students, and the media has taken the note of that in the newspaper, that you can see that these are the some of the achievements of our students in a project work which is shown over here. Okay, so I'm just giving you the idea of the placement in 2022. So in mechanical engineering, that full campus drive on 1st April, Yazaki India and Motherson Automotive was organized at our college campus, in which the BE and diploma mechanical and electrical students have to participate, and it was organized under the Lion Group Chennai. So here, total 18 students are selected from the mechanical engineering. I'm just giving the figure of mechanical. Similar number of the students from are also selected from the electrical, as well as from the diploma by the Yazaki India Private Limited, Sanand. These are the photographs of final year mechanical students, those who are selected over here, which is seen over here. These are the recent. They are giving their final year internship exam right now, and they will become the engineers after 2 days. But they have got opportunity to be selected or will work with the Yazaki India Private Limited. Then after, the 3 students are also selected through campus drive at the Vimal Agro Bardoli. The resume also come, and they have also selected the many students,
but I'm not having that but the reason Green Energy Private Limited have also selected the mechanical as well as the electrical students to their company. And if you have any question, you can ask me to show the glimpse of the mechanical engineering department, that how the mechanical engineering department works and what are the facilities available. So if you have any question, you please feel free to ask, or you may write over here in a chat box. Okay, thank you very much, Dr. KB Rathore sir, for the full information about the mechanical engineering of RNG Patel Institute of Technology. So once again, I heartily thanks to Dr. Latesh B. Chaudhary, all experts, and Dr. KB Rathore sir for your valuable time. So dear students, this is the end of day 1. So the day 2 will start from 11 a.m. again tomorrow, and the details of joining link we have already sent to your WhatsApp number, or within a few time you will receive the links on your WhatsApp number. Thank you very much for your patience. Thank you.